एज द रोविंग कंपटीशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। और ये जो रोविंग कंपटीशन ये स्टार्ट होगा बहुत खूबसूरत चार चिनारे से ये स्टार्ट होगा और SKICC तक ये कंपटीशन होने वाला है। और जो चार चिनारी अपने टूरिस्ट अपने सयाह के लिए जाना जाता है वो आज होस्ट करने वाला है वाटर स्पोर्ट्स इवेंट और रोविंग का इवेंट। आज ये चार चिनारी होस्ट करने वाला खेलो इंडिया स्पोर्टिंग इवेंट वाटर स्पोर्टिंग इवेंट बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और ये हमने हमेशा कहा है कि कश्मीर रियासत जो है वो उसमें टूरिज़्म की बेहद ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ही अब वाटर टूरिज़्म भी यहाँ पर आ रहा है। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग एथलीट्स अपना जौहर दिखाने के लिए अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ। 500 से ज़्यादा यहाँ पे जो है एथलीट्स आए हुए हैं और ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। और हमने देखा कि पहला कंपटीशन कितना ज़बरदस्त रहा। और ये ब्यूटीफुल डल लेक और बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं ज़बरवन हिल्स के किनारे ये रेस हो रही है और बड़ा ज़बरदस्त। और जो डल लेक अपने पिक्चरस्क्यू अपनी फिल्म्स के लिए जाना जाता था। नगमे यहाँ पे जो है पिक्चराइज किए जाते थे बैक इन 60s 70s 80s। लेकिन नाउ ये वाटर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए जाना जाएगा। फिलहाल बैक टू द कमेंटेटर्स। आपको हम सुन रहे थे कि किस तरीके से इस पहले संस्करण और पहले आयोजन को लेकर उत्साह है और यकीनन जम्मू कश्मीर की धरती पर एक और नया आयाम आज लिखा जा रहा है। और उसी के लिए ये आज के शेड्यूल की एक बार बात कर लेते हैं क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, जहां पर रोइंग के अंदर अब लाइट वेट डबल स्कल की स्पर्धा शुरू होगी और उसके साथ ही मेंस सिंगल स्कल, मेंस डबल स्कल और विमेंस 4 के अलावा लाइट वेट विमेंस डबल स्कल, मेंस सिंगल स्कल और फिर लाइट वेट विमेंस डबल स्कल के अलावा मेंस पेयर विमेंस 4 और लाइट वेट विमेंस डबल स्कल की स्पर्धाएं होंगी। विभिन्न जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का रहेगा। और यकीनन लगातार हम आपके साथ इस सारे एक्शन का आपके साथ मौजूद रहेंगे। कमेंट्री बॉक्स में मेरा नाम है विकास पांडे, मेरे साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत विपिन क्लेमेंट का। विपिन, इतने खूबसूरत नजारे के बीच में कमेंट्री करने का लुत्फ उठाने के लिए आप आतुर होंगे यकीनन। जी हाँ बिल्कुल, it's such a privilege to be here. On one side I have Vasaf and on the other side I have Vikas with me and Sandwich. It's a triple trio of V's, all right? The V sound, which is such a resonating sound in Hindi, and in this beautiful valley surrounded by these beautiful mountains of the Himalayan range, the words will resound over the next 3 days. So 21st, 22nd, and 23rd. 3 days of absolute beauty on your screens as we had an opportunity to blend in with the athletes earlier today. And we got some amazing conversations going about what they thought about Kashmir, what they thought about the beauty that they are seeing. Many of them, of course, visiting Kashmir for the first time, being at the famed Dal Lake for the first time as well. The Dal Lake on your screens, nestled in the heart of Srinagar, is a breathtaking and a beautiful destination that embodies the essence of nature's true splendor. This majestic lake is surrounded by, of course, the crown jewel of India, as I'd like to call it, the Himalayas, and is a testament to the rich cultural heritage and the natural beauty that India as a country boasts. This, of course, many people might not know, is a man-made lake built in the 17th century by Sultan Hassan Shah. And over the centuries, many sultans, then of course the British Raj, they all enjoyed visiting Srinagar in Kashmir and enjoying the waters of Dal Lake. Today, of course, scores, hundreds and thousands of tourists from across the country and all over the globe visit Srinagar and enjoy the beauty of this sensational lake. Well, we've started off with the first race for the day. This is the lightweight women's double scull. Don't get too worried. We're not right now in medal consideration. We have 3 states right now participating
as part of this race. Um, the four that were supposed to be part of these races were Manipur, Orissa, Jammu and Kashmir, and Meghalaya. विपिन, जम्मू और कश्मीर की टीम जो है इसमें हिस्सा नहीं ले रही है, हमें जो अभी अभी सूचना मिली है। और यकीनन ये तीन जो प्रतियोगी टीमें हैं उन्हीं के बीच में ये पहली हीट की शुरुआत हुई है। लेन नंबर 1 में मणिपुर संतोष यादव और रुकमनी हैं, तो वहीं ओडिशा के लिए स्वीटी और अनिष्का भारती, और वहीं मेघालय के लिए रीना कुमारी और किरण देवी इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। तो ये विमेंस स्कल की ये डबल स्पर्धा चल रही है, जहां पर दो खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। और यकीनन विमेंस लाइट वेट डबल स्कल की स्पर्धा के अंदर जो इस हीट से टॉप करेगा उसको अगले राउंड में जगह मिलेगी। याद रखिए, रेपेजेस के जरिए भी आपको दूसरा मौका मिलता है, और यहां पर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया डायरेक्ट फाइनल्स के लिए, तो आपके पास एक मौका होता है, आप रेपेजेस के जरिए बेहतर परफॉर्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल नजरें रहेंगी कि किस तरीके से ये पहली हीट समाप्त होती है। डल लेक मेजबानी कर रहा है इस पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का। ग्रुप ए में ये हीट नंबर 1 का आगाज हुआ है, जहां पर विमेंस लाइट वेट डबल स्कल्स की स्पर्धा चल रही है। ओडिशा की टीम इस समय आपकी स्क्रीन पर ओडिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्वीटी और अनिष्का भारती। और अब इंतजार और धीरे धीरे वो फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए ये हीट, और देखना दिलचस्प होगा कि इस पहली हीट से कौन टॉप करता है और कौन आगे बढ़ता है। यहां से ये खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं, डीडी स्पोर्ट्स के जरिए ड्रोन से लिया गया एक खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंच रही है। याद रखिए, साथ ही साथ आप इस प्रसारण का लुत्फ आप प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी उठा सकते हैं। मेघालय आपकी स्क्रीन पर इस समय रीना कुमारी और किरण देवी, और इस समय वो धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन की तरफ, और हमें जो यहां से नजर आ रहा है उसके हिसाब से फिनिशिंग लाइन की तरफ मेघालय सबसे आगे बढ़ रही है, यानी मेघालय टॉप करने की ओर अग्रसर है। लेकिन आखिरी लम्हों में फिनिशिंग लाइन की तरफ जाकर ये किस तरीके से फिनिश करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब रफ्तार पकड़ चुकी है। तीनों लेन में जो प्रतियोगी हैं वो अपना दमखम दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस समय अब देखिए, यहां पर ओडिशा ने इस हीट को लीड किया है, टॉप किया है। ओडिशा की ये आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की टीम संतोष यादव और रुकमनी, जी हाँ, इन्होंने संभवतः बहुत नजदीकी रहा ये मुकाबला। देखना दिलचस्प होगा कि किसने लीड किया है, टॉप किया है इस हीट को। आधिकारिक पुष्टि का हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन एक जबरदस्त हीट की शुरुआत हुई इस रोइंग की स्पर्धा के अंदर, जब हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं लाइट वेट विमेंस डबल स्कल्स की स्पर्धा में। और पहली हीट ग्रुप ए से किस टाइम के साथ और किस स्तर के खेल के साथ लीड किया है, ये आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन विपिन, पहली हीट का समापन हुआ है, यकीनन एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिला।
So we have been waiting for the official confirmation of the score lines and the qualifiers as part of heat number 1. And in that first heat, Manipur taking the kudos, which is the team that was in lane number 1, Santosh Yadav and Rukmani, making their way into the finals of the lightweight double scull. ग्रुप ए से हीट नंबर 1 मेंस डब सिंगल स्कल की अब स्पर्धा चल रही है। याद रखिए इसमें एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास ओलंपिक में खेलने का अनुभव प्राप्त है। अर्जुन लाल जट दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके पास एशियन गेम्स में कमाल का प्रदर्शन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो या फिर एशियन चैंपियनशिप की बात हो तो वो कमाल उन्होंने दिखाया है और इस लिहाज से आज काफी अहम होगा, उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी। वहीं मणिपुर के रिक्षांत सिंह और उत्तराखंड के अमन कुमार इस स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। इस पहली हीट में याद रखिए इस हीट को जो लीड करेगा वो सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जबकि जो बाकी 2 प्रतियोगी रहेंगे उनके पास रेपेचेज के जरिए फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। तो ग्रुप ए से हीट नंबर 1 का आगाज होता हुआ, जहां पर इस समय ये रहे आपके स्क्रीन पर अर्जुन लाल, जिनके पास वो अनुभव और वो ख्याति है, इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और इस समय यहां पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 के अंदर अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचे हैं और अपनी प्रतिभा के मुताबिक देखिए कितने आराम से ऐसा लग रहा है इस हीट को लीड कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। Neck-to-neck battle between these two. You can see all 4 of them, of course, leading as expected. Delhi's Arjun Lal Jat. Men's singles scull there. One of the important aspects when you're in a heat is to also manage your energy. You of course know that you need to peak for the finals. And Arjun knows very well that when it comes to comparing himself against the other players, he knows very well that he's head and shoulders above them. So once you make a lead and you are in a commanding position, you want to be comfortable, cruising his way towards the finish line as he approaches the end markers. We will of course wait for the official confirmation, but looks like Arjun is making it past the finish line. But let's not jump to any conclusions when it comes to the double scull. There are a lot of disqualifications that happen for various reasons, especially if you see that some of the athletes make it out of their lane. And so we always wait for the official confirmation. This race, of course, had Jammu and Kashmir, the host side. We had Uttarakhand, we had Manipur, and of course, Delhi. But a good beginning here at the Khelo India Water Sports Festival 2025. The first 2 races we started off earlier today with the lightweight women's double scull, where Manipur took the victory, qualifying into the finals. This one having, like Vikas was mentioning, the Olympian Arjun Lal Jat. So
clear favorite. Beautiful, majestic, sensational Kashmir in its full splendor. And I want to tell you, I know you're mesmerized by these pictures sitting at home, but it's 10 times more beautiful when you actually are here watching it with your own eyes. What you see on your screen doesn't quite justify the beauty of this landscape. So there you can see the setup. It's the men's double scull coming up. And we'll have Telangana, Manipur, Maharashtra, and Jammu and Kashmir in contention, just waiting for the green light to come up for them to race out. So I'm corrected there. Now that we can see the boats, we can figure out that it's the coxless pair. Just waiting for the go-ahead to put in their all as they look to qualify for the final. So this is heat number 1 for the men's coxless pair. Beautiful, sensational pictures here from the Dal Lake in Srinagar. The weather's reasonably nice in the sense we are still in the earlier part of the mornings. The temperature does pick up. The temperature does pick up towards 12. And we see temperatures around 29, 30 by the time we reach mid-noon. And with that, we have the flag off. This is the men's coxless pair heat number 1. For your eyes, we have in lane number 1, that's Telangana. Lane number 2 is going to be Manipur. In the third position, you can see Maharashtra and Jammu and Kashmir in the 4th lane. Telangana on your left, represented by Navdeep, Hardeep, that combination. Hardeep, of course, in the stern side. Then for Manipur, you have Harsh Pratap Singh, then Devraj Singh. Maharashtra has Vipul and Jasmail Singh. Jammu and Kashmir has Itiraza Ali and Mantazar Ali Mattu. Neck-to-neck battle, especially we don't have the perfect angle for us to figure out who's running in front, but based on the pictures we have, it looks like that it's a close contest here for the second position. The first position seems quite clear. Late charge there being made by Navdeep and Hardeep. Approaching the finish line, this is going to be a close game, close matter. Rowing away. Clear standout top 3 here.
I think the first two have definitely separated themselves from the others. You have lane 2 and lane 3 action, Manipur and Maharashtra. Who's going to be Manipur or Maharashtra? The crowd beginning to get into the mix as well, cheering their team along. It's a close finish. It's going to be a very, very close finish. Who is this going to go to? It's too close to call for us here. We'll have to depend on the race officials to answer and tell us who are the winners of this heat number 1 in the coxless pair. मेंस सिंगल्स का आपकी जगह हीट नंबर 1 मेंस कॉक्सलेस पेयर इस समय समाप्त हुई है ग्रुप ए से। और अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला इवेंट जो आपकी तरफ आ रहा है विमेंस 4 का, जहां पर इस समय 4 टीमें 4 लेन में नजर आएंगी आपको। तमिलनाडु, केरल, पंजाब और हरियाणा। तमिलनाडु को रिप्रेजेंट जहां कर रही हैं तमिल सेल्वी, रोज और रोशनी प्रिया के अलावा भाग्यवती। तो वहीं केरल की तरफ से मरिया रजू, विस्मया बिपिन, तृष्णा अनिल कुमार और मीनाक्षी वीएस। वहीं पंजाब की नवनीत कौर, मनवीत कौर और प्रभजोत कौर के अलावा मनदीप कौर। वहीं हरियाणा की तरफ से तमन्ना, नैना, संगीता और रिया इस समय इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और इसका आगाज बस होने जा रहा है। हीट नंबर 1 है विमेंस 4 के अंदर। और इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि ये ग्रुप ए का हीट नंबर 1 है विमेंस कॉक्सलेस 4। और यहाँ पर ये 4 टीमें हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, इन पर नजर बना के रखिए। हीट से जो लीड करेगा सीधे फाइनल्स में जाएगा। और वहीं बाकी 3 जो टीमें हैं उनको मौका मिलेगा उस रेपिचेज राउंड के जरिए फाइनल में पहुंचने का। तो एक आकर्षक रेस आने वाली है। अब तक कॉक्सलेस 4 के अंदर ये पहला इवेंट, पहला मुकाबला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। श्रीनगर के डल लेक से हम लाइव हैं। और अब तक जो हमने 3 हीट्स देखी हैं उसमें बहुत नज़दीकी मुकाबला देखने को मिला। लेकिन अब जब विमेंस 4 की बारी आ रही है तो वहाँ पे वो तालमेल बहुत अहम हो जाता है। वैसे तो ये पूरा खेल अगर तालमेल का है, किस तरीके से अपने पतवार ओवर्स जिसको बोलते हैं हम उसको सही इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने रिदम को मैच करते हैं, अपने तालमेल को बनाए रखते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। तो ये 4 टीमें इस समय अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं विमेंस कॉक्सलेस 4 के अंदर। ग्रुप ए का हीट नंबर 1 आपकी तरफ आ रहा है। और स्टार्ट बहुत सबसे वाइड आपको तमिलनाडु, बीच में आपको केरल और उसके साथ लगा हुआ आपको पंजाब, जबकि हरियाणा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इस समय कॉक्सलेस पेयर 4 के अंदर। और चलिए अब आगाज होता हुआ। स्टार्ट सही तरीके से करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आपने अगर वो फ्लैग
फ्लैग ऑफ से पहले अगर आपने स्टार्ट लिया तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल एक अच्छी शुरुआत ऐसा लग रहा है देखने को मिल रही है। और इस समय जो हमारे आपकी स्क्रीन पर दो वाइड लेन्स हैं, वो एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेन नंबर 1 केरला ऐसा लग रहा है लीड कर रही है इस समय। लेन नंबर 4, वैसे तो आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स आ रहा है उसके हिसाब से मत जाइए, लेकिन इस समय केरला की जो पोजीशनिंग है वो आपके दाहिने तरफ से दूसरी जो लेन है वो इस समय वो लीड कर रही है केरला की टीम, और वो आपकी स्क्रीन पर अब आपको नजर आ रहा होगा। सीधा क्वालिफिकेशन नजर में होगी, और अब देखिए लेफ्ट वाइड लेन से भी अच्छी चुनौती मिल रही है। पंजाब की टीम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पंजाब की तरफ से नवनीत, मनदीप, प्रभजोत और मनदीप इस समय दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं केरला की तरफ से भी एक मजबूत चुनौती पेश की जा रही है इस हीट नंबर 1 में। सीधा क्वालिफिकेशन, सीधा वो फाइनल की राह बनाने की कोशिश, और इस समय देखिए अपनी ताकत का जोर आजमाइश करते हुए इस रोइंग के इवेंट के अंदर, एक ओलंपिक इवेंट जहां पर हाल के वर्षों में भारत ने कम से कम एशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया था। हांगझो एशियन गेम्स हुए थे, वहां पे भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सिल्वर मेडल जीता था, जहां पर अर्जुन अल जट ने वो पेयर में भारत को एक पदक दिलाया था। और इस समय अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कॉक्सलेस 4 यानी 4, एक टीम में 4 रोअर्स, और वहीं इस समय कोशिश, तालमेल काफी अहम हो जाता है। स्कल्स में 2 पतवार आपको मिलती है, जबकि आपको अगर सीधे कॉक्सलेक्स में जाना है तो फिर आपको एक पतवार का सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो ऑड इवन की दिशा में होती हैं। अगर एक दाएं है तो दूसरे खिलाड़ी का उसके सामने बैठा हुआ बाएं होगा, और कुछ वैसे ही तालमेल बैठा के देखिए वही करने की कोशिश। सबसे पीछे जो इसमें रोवर होता है वो सबसे काबिल और सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है इस टीम स्पर्धा के अंदर, और वही कोशिश इस समय की जा रही है। It's a nice build up towards the finish, and true to pedigree, because Kerala with a very strong performance. Angel, Maria Raju, there's Vismaya, Bipin, Trishna, Anil Kumar, Minakshi. That combination, there is a strong fight being put up there in lane number 1. It's a close finish. It's a close finish. Eventually, Tamil Nadu and Kerala in that close contest there. See, finishing second is also really important because you have the rapid charge opportunity that will be given to you later. We will, of course, wait for the official confirmation, but to the naked eye, it looks like Kerala pulled off a win in that particular heat. It's the women's first heat in the coxless 4. Lovely pictures, beautiful scenes. Almost the perfect temperature for rowing in India. Dal Lake, of course, developing as a center which will be the homing ground for rowing talent in the country as we prepare the lineup for the next event that comes up. And this one is going to be heat number 2 for the lightweight double scull.
This is a women's heat number 2. We've already seen the first heat, which Manipur had won. We started off the day with that particular heat. This heat is going to be amongst the 4 as they get into their positions. We have a vacant lane number 3. And right now, let me quickly take you through what this lineup is going to look like. It's going to be Maharashtra in lane 1 on your right, Haryana next to them in lane 2, Punjab in lane 3, and in the 4th lane is going to be it's going to be Kerala. Great. So you have the lineup in front of you as well. You have the names of the rowers. Himati and Haripriya Vinesh will be favorites. But don't underestimate Team Haryana. Savita and Palak might have an outside chance there. A lot of volunteers in the mix as part of this wonderful initiative that we are been cherishing over this year, the Khelo India initiative. It started all the way back in January when we all went for the winter games, the Khelo India winter games, to Ladakh, Leh Ladakh for ice hockey and the ice elements of the winter games. Followed by, we had the national games, the Khelo India national games in Dehradun. Then we had the Khelo India winter games second leg in Gulmarg, followed by the Khelo India youth games in Patna. Soon after, we had the Khelo India beach games in Daman and Diu, and now we find ourselves in the beautiful city of Srinagar on the waters of Dal Lake as the race kicks off. What a start it's been in lane 1 for Team Maharashtra. Arushi and Shivrani Kataria in the lead right now, being tracked very close by those in lane number 2. That's Haryana's Palak and Savita. Shockingly, Kerala's Hima and Haripriya Vinesh are in the 3rd position. What a start. What a fantastic start for Maharashtra. They're off with a bang. Kerala seem to be struggling a bit with their rhythm. But you can't quite be sure. Some of these teams, very good starters. And then the technique elements come into play. How high do you lift the oars from the water? How are you able to glide that oar on the reverse end and get the insertion back in with minimal fatigue? But nothing stopping Team Maharashtra right now. Arushi and Shivarani zipping away. हीट नंबर 2 इस ग्रुप से, और यकीनन इस हीट से भी पहले हीट का जब समापन हुआ था डबल स्कल में, तो वहां पर मणिपुर ने लीड किया था, टॉप किया था, तो वो तो अपनी फाइनल में जगह सुरक्षित कर चुके हैं। अब हीट नंबर 2 से विमेन लाइट वेट डबल स्कल में कौन आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा किस तरीके से केरल ने अपना प्रभाव छोड़ा, और वही कोशिश इस हीट के अंदर भी, क्योंकि केरल यहाँ भी हिस्सा ले रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और केरल, हिमा और हरिप्रिया केरल की। पंजाब के खिलाड़ी ऐसा लग रहा है थोड़ा पिछड़ से रहे हैं, जो रोवर्स हैं वो थोड़ा प्रयास बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इस समय काफी अच्छे खासे फासले से ऐसा लग रहा है वो बढ़त बना के रखी है, और उस बढ़त को आगे ले जा रही है केरल की टीम। ऐसा लग रहा है इस समय पंजाब कोशिश में लगी हुई, कैसे भी करके इस हीट में कुछ अपना प्रभाव छोड़ पाए। तालमेल बहुत अहम है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। डबल स्कल मतलब दोनों हाथों का इस्तेमाल, 2 पतवार आपके पास, 2 अर्स, और इस समय
वही कोशिश महाराष्ट्र के ये एथलीट्स आपकी स्क्रीन पर, और अब फिनिशिंग लाइन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत नजदीकी दो वाइड जो लेन्स हैं दोनों तरफ आपकी स्क्रीन पर राइट और लेफ्ट, उसमें कड़ी चुनौती देखने को मिली, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद महाराष्ट्र ने यहां लीड किया है, लेकिन इंतजार रहेगा आधिकारिक पुष्टि का। केरल आपकी स्क्रीन पर, और ऐसा लग रहा है उन्होंने इस हीट को टॉप किया है। चार टीमें जो हिस्सा ले रही थी उसमें से ये आखिरी टीम अब जाके उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती हुई। महाराष्ट्र काफी मेहनत करती हुई और यकीनन व्हाइट फ्लैग इशारा करता हुआ कि एक सही तरीके से फिनिश की गई ये रेस, और समापन होता हुआ इस हीट नंबर 2 का विमेंस लाइट वेट डबल स्कल की स्पर्धा के अंदर। तो अब तक जो 5 हीट्स हुई हैं उसमें प्रभाव देखने को मिला है। विमेन लाइट वेट डबल स्कल की स्पर्धा अभी अभी समाप्त हुई है दूसरे हीट की, और उसकी आधिकारिक पुष्टि का हमें इंतजार है कि इस हीट से कौन विजेता बनकर निकला है। लेकिन ये खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं डल लेक और एक कृत्रिम प्रकृति की छटा बिखेरता हुआ वादियों के बीचों बीच इस समय ये आयोजन ये साबित करता हुआ कि भारत का भविष्य अब सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ ओलंपिक्स में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ा है, बल्कि दूसरे कई बड़े आयोजन में, चाहे वो एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात करें, वहां पे भी भारत ने प्रभाव छोड़ा है। श्रीनगर के डल लेक की ये खूबसूरत छटा इस समय धीरे धीरे अब हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्दियां आने से पहले इस समय पूरी तरीके से हरा भरा और ढका हुआ ये डल लेक, जहां पर कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं। जब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज हुआ है, आज पहला दिन है, तो आज रोइंग की स्पर्धा के अंदर ये आप मुकाबले देख रहे हैं, हीट्स का आगाज हुआ है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे भी कई खेलों का आयोजन हो रहा है। कुछ डेमोस्ट्रेटिव स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है, और अब तैयारी चल रही है अगले हीट की। जम्मू कश्मीर इससे पहले विंटर गेम्स का आयोजन कर चुका है, और अब एक और नाम जुड़ता हुआ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 21 से 23 अगस्त तक चलने वाला ये आयोजन, जिसमें कई सारे इवेंट्स आपके सामने आएंगे। और उसका दिन की शुरुआत हुई है, हीट की जब शुरुआत हुई है तो कुछ अच्छे और दिलचस्प हीट्स हमें देखने को मिली हैं।
Well, they slowly and steadily make it into our frames. Lane number, I believe this should be lane number 1. This is from the kayaking competitions that are taking place. And they are just sailing through our rowing landscape. Of course, we wouldn't quite know who's finishing in the first and second positions, but nice to see a few kayakers in the midst of all these rowers. As Vikas has been telling us, the difference between the double sculls, because you have dual oars to handle. The kayaks, of course, have that single oar which has the two blades at both the ends. And the kayaking competition finish line overlapping with the finish line of the rowing games. Personally, I must say that I myself enjoy kayaking a lot more than rowing. I find the excitement of being in those slim, slender kayaks. It's always good fun to be kayaking, even when you're either kayaking on your own or you're kayaking in a pair. It's good fun. Well, we will soon be getting back to rowing action here on the Dal Lake. As you can see, some of these rowers getting into their starting positions. We are looking at race number 6 for the day. This is going to be the second heat in the men's coxless single. We have Orissa, Jharkhand, Haryana and Maharashtra who are going to be competing. As you can see, the athletes preparing themselves to shine in this phenomenal sporting extravaganza called the Khelo India Water Sports Festival 2025. So the players seem to be getting ready as we coast over the waters. The beautiful Himalayas in the background. The clouds enveloping the beautiful peaks. We are in place. I can see two of the rowers there. And there's a closer look at the apparatus that they hold, waiting for the starter. The starter is in position as well. I can see the starter there stepping up to his starting perch. Any moment now you will see that start, and the four rowers will be well and truly on their way. Like I said, it's the men's coxless. A good look at the starting point. There's our view. All four rowers in their positions. Any moment now, we will await that go-ahead sign. On your right, in lane number 1, is going to be Orissa's Aviraj. As we start off, lane number 2 is Jharkhand's Ajay. Lane number 3 is Haryana's Saksham. And in lane number 4 is Pratik Nishad.
As things stand, it looks like Jharkhand's Ajay is off to a really good start, belting his way through these waters. Especially in a format like this, when you know that you have a repechage coming up later, the moment you realize that someone's had a brilliant start and you know that you can't really catch up, you will see rowers 3 and 4 in the third position and the fourth position. They start conserving energy because they know that they will have to keep some energy in the tank for the repechage later. So right now, clearly head and shoulders above the rest is Ajay, zooming away. Jharkhand's Ajay with a very strong start in the men single scull. Zooming ahead. So this is heat 2 in the men's single scull. And Ajay dominating proceedings, sandwiched on either side by Odisha's Aviraj, who you can see on the right, and Haryana's Saksham on the left. महाराष्ट्र के प्रतीक निषाद आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जो कि इस समय लेन नंबर 4 में अपनी पतवार के जरिए इस लाइन को लीड करने की कोशिश और इस हीट को टॉप करने की कोशिश की जा रही है। चार टीमें और 4 फाइनल में जाने की कोशिश, और इस समय ये फिनिशिंग लाइन की तरफ जैसे जैसे, याद रखिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की ये दूरी तय करनी है, और जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पार करेगा उसको फाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि बाकी प्रतियोगियों के लिए एक मौका और मिलेगा जब वो रेपचेज के जरिए फाइनल तक पहुंच सकते हैं। मेंस सिंगल स्कल यानी 2 ओवर्स का इस्तेमाल। ओडिशा, इस समय ओडिशा के वो रोवर आपको नजर आ रहे थे, अविराज, और ऐसा लग रहा है अब शुरुआती 2, अब तीसरी भी वो जो बोट है वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती हुई, और आखिरी देखना है कि इस, जी हाँ, आधिकारिक पुष्टि कि अब ये समाप्त हो चुकी है हीट, और इस हीट से हमें नतीजा मिलता है। इसका इंतजार करना होगा कि आखिर कौन है जिसने इस हीट को लीड किया है, टॉप किया है और सीधे फाइनल में जगह बनाई है। मेंस सिंगल स्कल ग्रुप ए का ये दूसरा हीट, और इस दूसरे हीट से कौन है जिसने वो फाइनल में सीधे जगह बनाई है, जबकि बाकियों के लिए जो मौका है वो जरूर मिलेगा। डल लेक का ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स के जरिए, और साथ ही साथ आप अगर यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आइए प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर, जिसका सीधा प्रसारण आप वहां लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। खूबसूरत वादियां, श्रीनगर चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से। विपिन, आप विंटर गेम्स का भी हिस्सा थे, और जब यकीनन आए होंगे तो इन पहाड़ों पर बर्फ की चादर आपने देखी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, और क्या खूबसूरत नज़ारा था।
डल लेक पे अगर आप एक शिकारा राइड कर रहे हैं या आप कनोइंग या कयाकिंग कर रहे हैं, आप ऊपर देखेंगे तो ये ब्यूटीफुल हिमालयन रेंजेस के ऊपर बर्फ की एक परत। कंफर्मेशन देखिए, रैंक्स का सक्षम फर्स्ट पोजीशन में आए थे। टाइम भी काफ़ी अच्छा था उनका 3 मिनट और 28 सेकंड। अजय सेकंड पोजीशन पे आए हैं 3 मिनट 34 सेकंड्स। अविराज थर्ड पोजीशन पे और प्रतीक निषाद फोर्थ पोजीशन पे। देखिए पानी की जो खूबसूरती है और इस दल लेक की जो खूबसूरती है, ये नज़ारा इस पेड़ की वजह से शायद थोड़ा और ही ब्यूटीफुल लगता हुआ। पानी के बीचों बीच ये दो पेड़, ऐसे लगता है जैसे कोई किसी आइलैंड से आप शुरुआत कर रहे हैं जब आप रेस की शुरुआत करते हैं। And of course, it is so beautiful for Vikas and me to admire these pictures from the shore. I only begin to think as a athlete, as a rower, when you go to that position, you're in position for the start and you look around you and you see that you are surrounded on all sides by these beautiful hills. As we prepare for the next lineup, this is the women's double scull that's coming up. In lane number 1, we have Kerala. Lane number 2, Manipur. Lane number 3, Andaman and Nicobar Islands. And in lane number 4, we have Himachal Pradesh. Lane numbers 1, like we mentioned, Kerala has Anina, Helani Joseph. And at the stern end, we have Ashwini. In lane number 2, we will have Morang from Manipur and Kumani next to her. Andaman, of course, represented by Haripriya and Harita in lane number 3. Orissa, Himachal Pradesh have Palak and Neha. We'll be taking a small pause because we have some of the athletes from the canoe who are going past. So we'll just wait and watch. We don't have the details for this particular race. If you are keen to watch canoeing and kayaking, I must tell you that we have yet another stream available on the YouTube where you can catch these athletes, a part of the rowing and canoeing setup. And this is a really demanding sport, especially when you're doing this all on your own. And he was so exhausted, he decided to give himself a swim. Patiently, somewhere behind them will be the women's heat number 2 rowers who will be waiting for their opportunities to get going.
If you were worried about the athlete who was on the canoe who decided to take a dive, let me tell you, don't worry, we have the best of the safety standards here as part of this Khelo India Games. And within no moments, you saw the boat ride up to him and asking him whether he was fine, and he said, no, I just needed to cool down in this heat as we are approaching about 11 a.m. here. And the sun is well and truly up. Temperatures are going up a bit. Still good conditions for rowing. We are around 27, 28 degrees, but out in the sun it does feel a little more than that. Waiting for the waters to settle a bit, and then we will get a go-ahead from the technical officials to start the women's heat number 2. Women's double scull. Yeah, so looks like we are getting into the next phase of getting ready for this heat. Women's double scull coming up. If you're wondering what the delay is about, let me tell you, we have the kayaking and canoeing course, which overlaps a bit with the rowing course. So we've just seen some of the canoeists go past us, and as they slowly make their way back, we will wait for the waters to settle. And all that is happening off your screens. Well, as I speak, one of them gets, a couple of them get onto our screen. So we're just waiting for them to clear the waters. And once they make their way past us, we will have the women's double scull. Yeah, there you can see the starting lineup beginning to take shape. We have 4 lanes in competition. What a fantastic race we just saw in the previous one. It was a race in which Ajay held the lead for the longest time, and then Saksham came from behind and took the glory, making a direct entry into the finals. Here in the double scull, the lineup looks like what it is. We have Kerala in lane number 1, we have Manipur in lane number 2, Andaman in lane number 3, and Himachal Pradesh in lane number 4. ग्राफिक्स टीम यूजुअली 1 to 4 होता है ना, लेफ्ट टू राइट होता है, आप लोग राइट टू लेफ्ट क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, इसलिए आप ऐसे दिखा रहे हो पोजीशन के हिसाब से। अच्छा, इसीलिए आप ऐसे दिखा रहे हो। तो आपके जो स्क्रीन की दाहिने तरफ है वो लेन नंबर 1 है। आमतौर पर जो स्क्रीन की बाईं तरफ जो होता है वहां से आप काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी स्क्रीन की सहूलियत के हिसाब से ये सब प्रदर्शित किया जा रहा है। विमेन डबल स्कल की हीट नंबर 1, और इस हीट में कौन बाजी मारता है, कौन सीधे फाइनल में प्रवेश करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। याद रखिए, स्टार्टिंग पोजीशन पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप फ्लैग ऑफ से पहले अगर आपने स्टार्ट लिया तो आपको डिस्क्वालीफाई होने का भी डर रहता है। तो ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कितनी सही समय पर आपका जो बोट है वो रिलीज किया जाता है संतुलन बनाने के लिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर लेन नंबर 1 केरल और
लेन नंबर 2 में आपको नजर आएंगे मणिपुर अंडमान लेन नंबर 3 में, और हिमाचल लेन नंबर 4 में। तैयारियां पूरी, और अब जाके आगाज होता हुआ ये हीट के शुरुआत होती हुई, और सबसे वाइड लेन नंबर 1 से इस समय लीड कर रही है केरल की टीम। ऐसा लग रहा है शुरुआत में देखिए कितना अच्छा खासा मार्जिन और गति शुरुआत से ही पकड़ते हुए हीट 1 में विमेन डबल स्कल के अंदर, और बहुत तेज गति के साथ इस समय निकलती चली जा रही है केरल की टीम। ऐसा लग रहा है एना हेलेन जोसेफ और अश्विनी कुमारन की ये जोड़ी इस समय अपनी पतवार और अपने तालमेल से बेहतर प्रदर्शन करती हुई, और एक अच्छा खासा फासला बना लिया है। आपकी स्क्रीन पर ये रही वो केरल की टीम जो इस समय लीड कर रही है इस हीट को। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल दाहिने तरफ उस हीट नंबर 1 में केरल की टीम। ग्रुप ए का ये मुकाबला इस समय चल रहा है जहां पर हीट 1 में शुरुआत हुई है और हीट से लीड करने की फिराक में कोशिश में, और देख लीजिए अब फासला कितना बढ़ चुका है। अब जैसे जैसे फिनिशिंग लाइन की तरफ जाएगी वो रेस, वैसे वैसे रोवर्स की ताकत और बढ़ती चली जाएगी। और इस समय वहीं कुछ देखने को मिल रहा है, केरल बिल्कुल कहीं भी कोई टक्कर नहीं मिल रही है। हिमाचल जरूर कोशिश कर रही है, हिमाचल की जो जोड़ी है पलक और नेहा की, वो थोड़ा सा मार्जिन को कम करने की, लेकिन मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है। जो फासला बनाया है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि यहां से अब बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस हीट को टॉप करने में केरल की टीम को। और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लेन वायलेशन का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर दूसरे और तीसरे नंबर पे जो टीमें चल रही हैं उन पर अगर नजर डालें तो बहुत ज्यादा फासला है नहीं दोनों के बीच में, तो वो फासला मिटाया जा सकता है जरूर। लेकिन इस समय केरल की टीम इस समय लीड कर रही है इस हीट 1 को विमेन डबल स्कल की इस स्पर्धा के अंदर। और ये मणिपुर की टीम इस समय आपकी स्क्रीन पर, मणिपुर की तरफ से आशा प्यारी देवी और भुवनेश्वरी देवी की ये जोड़ी इस समय कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे हो कर वो फासला जो है वो थोड़ा कम किया जाए। लेकिन केरल की टीम तो ऐसा लग रहा है बहुत आसानी के साथ इस हीट को अपने नाम करने जा रही है, क्योंकि अब फासला आप इसे ड्रोन की जो फुटेज है उसके जरिए आप सीधा प्रसारण इस माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फासला धीरे धीरे बढ़ा के इतना दूर लेके गई है केरल की टीम, जहां से उनके लिए अब वो टॉप पोजीशन बहुत साफ नजर आ रही होगी। एक्सट्रीम राइट ये रही केरल की जोड़ी। स्कल की स्पर्धा यानी आपके दोनों हाथों का भरपूर इस्तेमाल दोनों तरफ। और अब देखिए धीरे धीरे थोड़ी सी पकड़ बनाने की कोशिश, और एक्सट्रीम वाइड में जो हिमाचल की टीम है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है मार्जिन को कम करने की कोशिश कर रही है, अच्छी चुनौती पेश कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा नजदीक लेकर आई है। अब देखना होगा कि फिनिशिंग लाइन को कौन सबसे पहले क्रॉस करता है। एक बेहद दिलचस्प मुकाबला, लेकिन अभी भी केरल ऐसा लग रहा है इसको फिनिश करेगी टॉप पर रहते हुए। जी हाँ, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा, लेकिन केरल ऐसा लग रहा है एक और बार बाजी मारने में कामयाब रहा। What a race, Vikas, what a race. There was a fight back there in the end. Kerala able to hold strong. Nina Helani Joseph and Ashwini Kumaran. You have the bow and the stern sides. Ashwini preferring the stern. Anna at the bow. So that was the women's double scull. Heat number 2. Kerala taking the kudos there. We will, of course, as always, be practical and wait
for the official announcements. We had Manipur alongside them, then there was Andaman in lane number 3, and in position number 4 was Himachal Pradesh. So we are set for the next men's heat number 2 this time round. So the men's double scull heat number 2, as we make it to race number 8 in the Khelo India's Water Sports Festival. There we have confirmation of what the scorelines and the timelines were. Kerala, of course, take that first position, 3 minutes and 45 seconds. Position 2 went to Himachal, which was a slightly close affair that made it a little interesting towards the end. But right now we are getting to a position wherein we will be watching Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan and Orissa in action. There you see. And you'll see the lane numbers are 4-1. That's because that's in reference to the arrangement of the starting positions. In lane number 4, we have Ankit and Vishal. In lane number 3, we have Nitesh and Anshul. In lane number 2, we have Ankit Yadav and Jay Chaudhary. Lane number 1, Delhi's Sanjay and Abhishek. And we are off. Looks like there is an issue. Perhaps there was a false start. Just trying to figure out how things are going to fall in place. Looks like a false start. So the boat's making a U-turn, getting back into their positions. Going to be very interesting, especially in a moment like this when you put in your 100% and you start off with that energy burst. The good view of where the kayaking competitions are also taking place, a good view of the lake overall. All along the lake, beautiful places of worship, all through and through, reflecting the rich cultural heritage of this beautiful state. The unsuppressible mountain ranges of the Himalayas. Heat number 2 in the men coxless pair, as we are at the starting point of the rowing competitions at the Dal Lake. We are past 11, so close to somewhere the peak temperature for the day. Of course, I would dare to predict that maybe the peak temperature for the day will kick in around 12:30 or around 1, because the water is still relatively cool right now, so the rowers won't quite feel it. But in about an hour's time, the water temperature will turn warm as well, and you reach that situation where you get peak temperature on your course. Heat number 2, new coxless pair at the Dal Lake in Srinagar. Looking to get back into the position. That looks like the teams are almost there. Yeah, you can get the views of the lanes from this particular action. I can see that lane number 2, they're still trying to get themselves organized. And 1, 3 and 4 definitely seem to be ready. Lane number 1 on your right and lane number 4 on the extreme left.
Beautiful waters of the Dal Lake, welcoming these rowers today. Well, that is the starter's role. Vikas, a slightly thankless job, I might say, from a technical point of view. But you kind of make sure that the canoe or a kayak or a boat in this case is in contact with the starting point, and you need to be in a position to let go at just the right time. And it looks like we've had a good start this time round. Confirmation of that lineup. Lane number 1, Delhi. Lane number 2 is Uttar Pradesh. Lane number 3 is Rajasthan and Orissa in lane number 4. And Ankit and Vishal of Odisha seem to be off the mark in a blitz. Trying to keep pace with them are in lane number 2. Uttar Pradesh. Orissa and UP seem to be in contention, in competition. Orissa with that good start. Uttar Pradesh's Ankit Yadav and Jay Chaudhary trying to catch up with them, but looks like clearly Ankit and Vishal have decided that they are going to be unstoppable in this race, pulling away strong, pulling away with all might. Ankit and Vishal are racing away from Orissa. Lovely view from the skies as we watch Ankit and Vishal there in position. Lovely angle for us. इस समय अगर आप देखें सबसे पीछे जो टीम चल रही है, याद रखना होगा कि लेन वायलेशन का उतना खतरा तब तक नहीं है जब आप किसी अपने साथी जो प्रतियोगी खिलाड़ी हैं टीम है उनके समानांतर ना चल रहे हों। आपके पास पूरी जगह है तो आप उस लेन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक निश्चित मार्क तक ही, क्योंकि फिर आपकी दूरी भी बढ़ जाएगी जब आपकी वो बोट जो नैरो होगी, कोण बनेगा, उसकी वजह से आपको ज़्यादा दूरी भी तय करनी होगी, तो ये भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। मैन कॉक्सलेस पेयर के अंदर इस समय ये हीट 2 का आगाज हुआ है और दिल्ली एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। संजय और अभिषेक की ये जोड़ी, और लेन नंबर 1 में वो इस समय चल रहे हैं जरूर, लेकिन देखना होगा कि अब जबकि हाफ मार्क से आगे निकल चुकी है जोड़ी, तो क्या प्रभाव छोड़ पाते हैं ये चारों टीमें। जिस तरीके से अभी ये रेस चल रही है, ये हीट चल रही है, अंदाजा लगाना इतना भी आसान नहीं कि यहाँ से ऐसा लग रहा है जो एक्सट्रीम वाइड, यानी ऐसा लग रहा है ओडिशा के अंकित और विशाल इस समय जो लेन नंबर 4 में थे वो लीड कर रहे हैं और उन्होंने फिनिश किया है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान के लिए जरूर एक नजदीकी भिड़ंत देखने को मिल रही है। लेकिन यकीनन ऐसा लग रहा है ओडिशा के अंकित और विशाल ने पहला स्थान हासिल किया है इस हीट से। लेन नंबर 4 से वो आगे बढ़े थे और धीरे धीरे करके छोड़ते चले गए, और उस प्रदर्शन को पीछे छोड़ने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस हीट को अपने नाम किया है मेन कॉक्सलेस पेयर के अंदर, और पहला स्थान हासिल करते हुए फाइनल की टिकट कटाई है। और आधिकारिक पुष्टि भी कि ये किसी तरीके का वायलेशन नहीं है,
ओडिशा। ये रही आपकी स्क्रीन पर वो जोड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे, अंकित और विशाल, जिन्होंने इस हीट को टॉप किया है और फाइनल में जगह बनाई है अच्छे तालमेल के साथ, अच्छा प्रदर्शन, और इस ग्रुप ए की हीट 2 से अपना वर्चस्व दिखाते हुए टॉप किया और सीधे फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन एक अच्छी रेस और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला विपिन, और यकीनन जो बाकी तीन टीमों के एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको भी मौका मिलेगा, रोवर्स को, कि वो रेपेचर्स के जरिए फाइनल में एंट्री मारे। That's right. What a fantastic race by these two, Ankit and Vishal from Orissa, with that brilliant race. Well, we're getting set for the next race. This one is going to be the women's 4, heat number 2. That's coming up. Getting into place. The rowers getting into position. All set for race number 9. There we have the confirmation of the official results. First position went to Team Odisha, 3 minutes and 27 seconds. Very dominant. You can see a 4-second gap between the team that finished second. That was Delhi with 3 minutes and 31 seconds. Close behind was Uttar Pradesh in lane number 3, and bringing up the rear for Rajasthan in lane number 4, 3 minutes and about 40 seconds or so. The calm waters, the cool air, all set to lead us into the women's coxless 4. So there we have we are ready for this one. This is Odisha in lane 1, Madhya Pradesh in lane 2, Maharashtra in lane 3, Himachal Pradesh in lane number 4. So we have lane number 1, Odisha. At the bow will be Sonali Swain, alongside her Nikita, then Avinashi. Anuprit Kaur in the 4th position, bringing up the stern. Manipur will have Rajini Moni, we'll have Fulwant, we have Suhani and Akansha. Lane number 3, we have Maharashtra Siddhi Shivan, Pratigya Ishwari. And in Himachal Pradesh's lineup, we have Aradhana Shreya, Priya Thakur and Sakshi. So we are off with a blitz, and the team that's holding the lead, it's almost as if the form for the Orissa state is continuing from the previous race into this one. Orissa off to a good start, but not letting them go step away is Team Manipur. And I think slowly it's a neck-to-neck battle. It's just the bow of the boats that's keeping them in the first place. Orissa still holding on as Manipur slightly seem to be overcompensating. Maybe the right-hand bias showing clearly, drifting towards the right. Tends to happen amongst rowers in a tough battle when you're giving it your 100%, pulling it through and through. You tend to overcompensate towards the bias. And a slight drift towards the right, and perhaps that is what will cost them in this particular heat. Heat number 2, women's coxless 4s. Orissa leaps and bounds ahead in that lane number 1. And as we were talking with Vikas, what happens is once you see a dominant player in the mix, the others just decide to take a step back, because you want to keep yourself calm and composed for the fact that you have the repechage which needs to be in place.
The technical boat coming into play, cutting off the trailing pack of three for false starts and allowing them to be in position right now. Seems like a good, comfortable race there. So let's wait and watch. Is there going to be a restart, or is there the fact that maybe they will sign off saying that Orissa takes the first position and the other three will take part in the repechage? Or is it going to be the fact that we will have to redo this race? That's Team Maharashtra there in your mix. Heat number 2, women's coxless 4. Let's remind our viewers what happened in heat number 1. Heat number 1 in this particular competition was between Tamil Nadu, Kerala, Punjab and Haryana. Kerala taking that position with a direct entry into the finals. And that team had Angel, Maria, Vismaya, Trishna and Minakshi. And in this second heat, it seems like the story will be all about Team Orissa, who sealed the deal with Sonali Swain, Nikita, Avinash Kaur, and Arun Priti Kaur. Let's take a short pause here as we wait for the official scoreline and get into race number 10 for the day. And that will be the women's double scull, heat number 1. That's the Odisha team on your screens: Sonali, Nikita, Avinash Kaur and Anupriti Kaur. Getting some hydration done because it's getting quite hot there on the waters. थोड़ा पॉज देके फिर स्टार्ट करें, राइट?
Okay, as we wait for what the officials' decisions will be for that particular race, let's move on to the next one. This is the women's double scull. And in lane number 1, we will have Manipur. Lane number 2 will be Haryana. Lane number 3 will be Orissa. And 4th should be Maharashtra. So we are off. Looks like we have a good start once again from lane number 1, Vikas. Seems that perhaps lane number 1 seems to be a slightly easy terrain. Manipur there off to a great start is Vanshika Sahu and Priyanka Chahal. Brilliant start there. Good start there by Manipur, Vanshika and Priyanka. There's still some belief that you can see in the Orissa team and Haryana team. They've not yet given up, trying to keep pace with Team Manipur. But Manipur creating good distance now between themselves and Team Haryana. That's Maharashtra trailing in the 4th position on your screens. Good beginning and a strong finish. That seems to be the story for Team Manipur. What a fantastic race these two girls are racing. On the bow is Vanshika Sahu and on the stern is Priyanka Chahal. Blitzing away there for Team Manipur. What a strong row it has been by those two girls. There you can see clearly it's almost as if it's a 1, 2, 3, 4. Lane number 1 in the first position, Manipur. Haryana's lane number 2. Haryana's lane number 2. Orissa in lane number 3. Maharashtra is in lane number 4. The quick and brilliant finish by Team Manipur, holding on to that lead quite comfortably. Blitzing ahead, full speed on. This is the Madhya Pradesh team. Maharashtra there in the 4th position. On your screens is Akshada and Akanksha. In the foreground there is Team Manipur in that bright fluorescent. Vanshika and Priyanka. But they're getting some fight from Haryana's Pavitra and Diksha. Can Team Manipur, they started really strong, but can they hold on to that place? Or is it going to be Team Haryana? One of the closest races that we have seen thus far. It's as if Manipur are losing out steam because they put in too much into that start as Haryana looks to capitalize on that blunder. Team Haryana and Team Orissa looking to finish strong, but once again shifting through the gears was Team Manipur, finishing strong when it mattered, holding on to their nerves against the late charge from Haryana and Orissa. Vanshika Sahu and Priyanka Chahal. We will, of course, wait for the confirmation that will come from the finish line. Looking at all the technical elements to ensure that there was no disqualification.
That's the Manipur team. Good race by these girls as we wait for what the lineup will reveal. Let's wait and watch for what the results come from the end line. Good wind conditions as well. You have some wind, it's not too much that it disturbs the rowers. At the same time, it's good enough to help them dissipate the heat, the sweat that they generate. And the light breeze helps them keep their body temperatures cool. So with that, we wrap up row number 10, fixture number 10. I'm told from the officials that we will be redoing fixture number 9, which was the women's 4. And for that, we will have to come up with that race a little later. We will wait and tell you as and when that race comes up. But right now, we've wrapped up about 10 races or so. तो आधिकारिक पुष्टि विमेन डबल स्कल की, जहां पर हीट 2 का नतीजा आपकी स्क्रीन पर है। ओडिशा की टीम ने टॉप किया, पहला स्थान हासिल किया 3 मिनट 42.44 सेकंड का समय लेकर। वहीं हरियाणा उसके पीछे दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहते हुए इस हीट को समाप्त किया। लेकिन ओडिशा ने डायरेक्ट फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है इस हीट से, तो यकीनन एक अच्छा प्रदर्शन। वहीं विमेन डबल स्कल की बात करें एक बार फिर से, तो ओडिशा का वो प्रदर्शन देखने को मिला और यकीनन इस प्रदर्शन से तो यही लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मुकाबला खेल के गई ये टीम ओडिशा और उन्होंने अपना परचम लहराया है। लेकिन वो कुछ ऐसे नतीजे थे जो ऐसा लग रहा है संभवतः इससे पहले जो नतीजे आए थे, देखना होगा क्या किसी तरीके की पेनल्टी इंपोज की गई है, क्योंकि हमें एक पल के लिए ऐसा देख के लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश ने उस हीट को लीड किया है। लेकिन इसके बाद आधिकारिक पुष्टि किसी और रूप में आई है। तो फिलहाल अब एक और हीट का और संभवतः इस सेशन के आखिरी हीट का आगाज होने जा रहा है। छोटा सा उसके बाद एक ब्रेक होगा और उसके बाद ग्रुप बी के मुकाबले खेले जाएंगे। रोइंग की स्पर्धा चल रही है इस समय। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के अंदर श्रीनगर का डल लेक इसकी मेजबानी कर रहा है और अब तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। ग्रुप ए में हिट्टो का वो विमेन कॉक्सलेस 4 का जो मुकाबला जो किसी व्यवधान की वजह से पूरा नहीं हो सका था, आपको नजर आ रही होगी। ओडिशा लेन नंबर 2 में मध्य प्रदेश, लेन नंबर 3 में महाराष्ट्र और लेन नंबर 4 में हिमाचल प्रदेश। तो ये 4 टीमों के बीच में फिलहाल ये स्पर्धा चल रही है और जहां पर कोशिश उसको टॉप पोजीशन हासिल करके खत्म करने में होगी। ये ब्रेक से पहले एक
आखिरी हीट इस समय चल रही है। ग्रुप ए के जो हीट थे वो अब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद ग्रुप बी के हीट्स का आगाज होगा। उससे पहले ये आखिरी हीट इस समय चलती हुई विमेन कॉक्सलेस का ये हीट नंबर 2 चलता हुआ। इससे पहले जब ये हीट का आगाज हुआ था तो किसी तकनीकी व्यवधान की वजह से उस हीट को पूरा नहीं किया गया और वापस अब उस हीट को पूरा किया जा रहा है। और यकीनन यहाँ से कोशिश इन 4 जो टीमें हैं उसमें से कौन टॉप पर जाता है विमेन कॉक्सलेस 4 के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। और कोशिश वही रहेगी कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर इस हीट को टॉप किया जाए ताकि सीधा क्वालिफिकेशन हासिल किया जा सके। ये 12 चल रहा है ना अभी? हाँ, ये 12 चल रहा है, 12 चल रहा है। ये नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, 11 नंबर मैच, 12 बजे वाला। 11 है ही नहीं है, ये सिंगल है। अभी अगर ये चल रहा है, कंफर्म कर लो कि ये चल रहा है कि नहीं, ये ऑफिशियल रेस है कि नहीं। अगर ये ऑफिशियल रेस है तो ये 12 है। हाँ, तो ये 12 है। दिखा कहता हूँ। So this is wrong. अभी चल रहा है 12, ये दिखा रहे हो आप 11 का। सिंगल चल रहा है, सिंगल चल रहा है, उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। देखो, ये सुनो इनकी बात क्या बोल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। डोंट वरी, अभी तो सर हमारा गड़बड़ा जाएगा। Race number 12 in progress, women's single coxless, and this was between Manipur, Andaman, Haryana. So those are the 3 who are in competition. Yumani from Manipur, Andaman's Shirisha, and Haryana's Kafi. Manipur, Andaman, and Haryana. And with that, we come to an end of the women's single scull, and heat number 1 comes to an end. We will, of course, wait for the official scoreline.
Beautiful pictures here at the Dal Lake as we get going, waiting for the next race to come up. We'll be moving to race number 11, which is the lightweight coxless duo. We will have Chandigarh, April, Andhra Pradesh. We will have Uttar Pradesh in the mix along with Rajasthan for that particular race. स्टार्ट हो गई क्या रेस? पंकज जी, पंकज जी, रेस चालू हो गई क्या? हम तो दिखाइए, बताइए तो। 9 नंबर में जाएगा तो इस समय एक बार फिर से हीट 2 जो कि किसी वजह से खत्म नहीं हुआ था, विमेंस कॉक्सलेस 4 का ये हीट नंबर 2 इस समय चालू हो चुका है और उसकी शुरुआत हुई है और इस समय आपकी स्क्रीन पर ये 3 टीमें नजर आ रही होंगी, 4 खिलाड़ी हर टीम में। और याद रखिए ये एक तालमेल का खेल है और इस तालमेल को बनाए रखना बहुत अहम। ग्रुप ए से ये आखिरी हीट होगी, विमेन कॉक्सलेस 4, और जहां उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किसी व्यवधान के कारण ये हीट पूरी नहीं हो पाई थी और वापस इसको सुनिश्चित किया जा रहा है इस समय। और उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल की टीमें इसमें हिस्सा लेती हुई हीट नंबर 2 ग्रुप ए से विमेन कॉक्सलेस 4। इसके बाद फिर से वापस हम चलेंगे ग्रुप बी के मुकाबलों की तरफ, लेकिन फिलहाल इस समय ये हीट आपकी तरफ आ रहा है। Women's coxless 4 in progress. Team Odisha with a slight change. We have Sonali Swain who's at the bow. We have Anushka, Sonalika, and she is in the third position. And the stern is Arunrati Kaur. Maharashtra there on your screens as well. Team with Siddhi, Shravani, Pratigya, and Ishwari. But once again, we have a strong race being led by Team Orissa, showcasing their class. Even in the first run that we had, Orissa were off the blocks in a blitz. They are maintaining that lead
comfortable position right now as Team Odisha come home in the first position. So that was women's coxless 4, wherein Team Orissa of Sonali Swain, Anushka, Sonalika, and Anupriti Kaur take first position. All set to qualify into the finals. We will, of course, wait for the official times and the confirmation to come from the technical committee, and then you will see the results on your scoreboard. This is my favorite view of the Dal Lake, where you can see this backdrop with the steps there, some of the beautiful hotels. I prefer that view to the starting point view. And on our cameras, this of course looks a lot closer. But when we guys, from where we are sitting very close to the finish line. And it's a huge distance away for us where the starting point is. Now we are going to do next 11. Things seem to be in place right now for the lightweight men's double scull. And we have Chandigarh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan in contention. Taking a look at the teams, in lane number 1, you will have Chandigarh's Raman Pal Singh. Alongside him is Jaspal Singh. And at the far end, that is Team Rajasthan, if I'm not mistaken. Dinesh Kumar and Vineet Talod. Lane 1, we have Chandigarh's Ramanpal Singh and Jaspal Singh. Andhra Pradesh in lane 2, we have Santosh and Gudeli Pavan. Then in lane number 3, Uttar Pradesh, Sumit Rathi, Harmant Yadav. And in lane 4, we have Vineet Talod and Dinesh Kumar of Rajasthan. The starter is set. The technician next to him is set. And any moment now, once he coordinates with the finish line, technical officials, he will be giving the green flag for the rowers to get going. And we are set to go. Chandigarh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan. Off they go with a good start. I think clearly you can see lane number 3 seems to have gotten off to a good start there. Uttar Pradesh in the bright orange. Easier to spot than some of the others. A good beginning in lane 4 as well for Rajasthan. We will wait for the best of the pictures available to us for us to be able to gauge who is in the lead, as all these 4 teams right now look in a set position. Lane number 1, Team Chandigarh, Ramanpal Singh and Jaspal Singh.
off to a good start. Alongside them is Balle Santosh and Pavan Kumar. We have lane number 2 dropping off, so we can see a clear race forming between Chandigarh, Uttar Pradesh and Rajasthan right now. Chandigarh there on your screens in those black jerseys, Ramanpal Singh and Jaspal Singh. But the race seems to be belonging, Vikas, right now to Andhra Pradesh. Slight lead. This seems to be the closest race that we have seen thus far. जी हाँ, और विपिन देखिए तो 3 टीमें हैं, उनके बीच में फासला बहुत कम है। और दूसरी लेन को छोड़ दीजिए तो पहली, तीसरी और चौथी लेन के बीच में बहुत दिलचस्प मुकाबला, यानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस समय जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ से अंदाजा लगाना कि ये रेस, इस हीट को कौन लीड करेगा, टॉप कौन करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, एक्सट्रीम वाइड, यानी पहली ही जो लेन है जिसमें चंडीगढ़, रमनपाल सिंह और जसपाल सिंह, इनकी ये जोड़ी इस समय लीड कर रही है। और यकीनन आंध्र प्रदेश की भी अगर बात करें तो बाले संतोष और गुदली पवन कुमार, वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फासला है नहीं, तो इसलिए किसी तरीके से निरस्त नहीं कर सकते कि किसी एक टीम को इस समय क्लियर कट लीड है। और जैसे जैसे उस फिनिशिंग लाइन के करीब जाएंगे, ये रेस और दिलचस्प होने वाली है। लेकिन फिलहाल टीम चंडीगढ़, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल लीड जो बना के रखी है उसने, वो लीड पर जरूर है, लेकिन उस लीड को रफू चक्कर कभी भी वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, अगर टॉप गियर में एक बार से गाड़ी निकली, आपकी बोट निकली, तो फिर वहां से पिछड़ना बहुत, टीमों के लिए पछाड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंडीगढ़ आपकी स्क्रीन पर इस समय देखिए किस तरीके से वो तालमेल बनाकर अपने पतवार को समन्वय के साथ आगे बढ़वाते हुए उससे, और बहुत ज्यादा किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रही है। देखिए कितने आराम से उनको पता है कि वो फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ उस हीट को वो लीड करेंगे, टॉप करेंगे। जी हाँ, टीम चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है। रमनपाल सिंह और जसपाल सिंह, इन्हें टीम चंडीगढ़ को पहला स्थान दिलाया है और क्वालिफाई कराया फाइनल के लिए। सीधा प्रवेश मिलेगा टीम चंडीगढ़ को फाइनल्स में इस मैन लाइट वेट डबल स्कल की स्पर्धा में। और अच्छी टक्कर देखने को मिली जरूर, 3 टीमें एकदम समानांतर चलती रहीं, लेकिन अंततः वो नतीजा गया पक्ष में टीम चंडीगढ़ के, और चंडीगढ़ फाइनल में प्रवेश हुए मिलता हुआ। If you're wondering what that flag is, it's for race completion, as this duo from Chandigarh have taken the victory in heat number 1. Ramanpal Singh and Jaspal Singh in the first position. We will of course wait for the confirmation of the scoreline. That was race in number 11 for the day. We have another 7 to go. Race number 12 we've already completed, and we will be jumping ahead to race number 13. Women's lightweight double scull. That's the next race coming up. We will have
बग तो हटवा दीजिए, अब हो गया ये पिछला वाले का बग चला रहे हैं. Race number 13 as the girls come into their positions. It's been a strong performance by Madhya Pradesh rowing, predominantly coming out in their bright fluorescent outfits. And there we are ready with this. Lane number 1 is going to be Team Orissa. That's Sonalika Das and Anushka Patel. Lane number 2 is Kerala's Shrudimo. And we have with her Amala Rose. Lane number 3 is going to be Madhya Pradesh, and that's Manisha and Jigyasa. As we get going right away, let's watch this lineup. It's been a good start down the middle. Group B Heat Women's Coxless pair looking to qualify directly into the finals. That's a nice start right down the middle. Let me remind you, lane number 1 is on your right and lane number 4 will be on your left. Team Kerala there rowing right down the middle. Kerala there on your right in blue. And Orissa did not start, so that's Kerala, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh in the mix. Kerala off to a brilliant start and I think quite comfortably leading all the way. That's Madhya Pradesh on your skins. Madhya Pradesh's Manisha there that you can see, and Jigyasa. That's a nice duo. Manisha and Jigyasa holding the lead in that top position as they're getting closer and closer to us, wherein we start getting into a position where we can judge how this race is going to end to some extent as they make their way towards the finish line. So if you're wondering what that MPR stands for, it's Madhya Pradesh Rowing. At the other end, the other team there, Himachal, and Kerala in their traditional blue and dark blue, light blue and dark blue. The rowers approaching the midway mark. Madhya Pradesh in the lead. Kerala falling behind. And Himachal there in the background. And you reach a stage where once again, I think Himachal will very soon decide that, okay, let's keep some energy left for that repechage and slow down as Madhya Pradesh rowing very strongly finishing this particular heat. Good performance, Vikas, overall by Madhya Pradesh rowing. We have this combination of the
A nice set of Manisha and Jigyasa there, comfortably taking home this heat number 1 in the women's coxless duo. मध्य प्रदेश की टीम ने इस हीट को टॉप किया है और मनीषा और जिज्ञासा की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया, जो आपकी स्क्रीन पर आप नजर आ रही होंगी। अपनी ताकत का परिचय दिया और अच्छे तालमेल और समन्वय के साथ इस हीट को लीड करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। हीट 1 विमेन कॉक्सलेस पेयर के अंदर ये खत्म हुई है। तीसरी लेन के साथ शुरुआत की थी और एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। याद रखिएगा, इस हीट के अंदर उड़ीसा भाग नहीं ले रही थी और 3 टीमों के बीच में पहला स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। मनीषा डांगी और जिज्ञासा रेगर की जोड़ी ने ये हासिल किया है डायरेक्ट फाइनल का क्वालिफिकेशन और अब वो सीधे प्रवेश पा चुके हैं फाइनल्स में, यकीनन एक अच्छे प्रदर्शन के बदौलत। ग्रुप बी में हीट नंबर 1 से विमेन कॉक्सलेस पेयर का ये इवेंट इस समय समाप्त होता हुआ, लेकिन अभी भी एक्शन लगातार जारी है। डीडी स्पोर्ट्स के जरिए आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यूट्यूब पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग देखना है तो आप जाइए प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। और ये पुष्टि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर 3 मिनट 48.54 सेकेंड का समय लेकर, केरल दूसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश तीसरे। बहुत ज़्यादा फासला केरल और मध्य प्रदेश के बीच में था नहीं, लेकिन अच्छा खासा फासला बना के रखा मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से, और टॉप किया इस हीट को और फाइनल में जगह बनाई है। बहुत बहुत मुबारक आपको, आप फाइनल में पहुंचे हैं। डल लेक मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 के अंदर और आज पहला दिन और पहले दिन का एक्शन जारी है। लगातार रोइंग के इवेंट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ कयाकिंग के भी आप इवेंट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिकारा रेस, ड्रैगन रेस जैसे इवेंट्स शामिल हैं। तो एक अच्छी पहल भारत सरकार और खेल मंत्रालय की, जिसके जरिए आज एक और खेलो इंडिया का पड़ाव पहुंचा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इससे पहले हमने विंटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया था और अब हम वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं समय डल लेक से। याद रखिएगा, इसी साल पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी आयोजन हुआ था, जब दीव में इसकी मेजबानी की गई थी, तो वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब जब वाटर स्पोर्ट्स की बारी आई है तो कई बड़े नाम, और जैसा कि हमने पहले भी बताया, विपिन, हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके का स्तर रहा है, धीरे धीरे रोइंग के खेल में भी, वाटर स्पोर्ट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। एशियन गेम्स में जिस तरीके से देखा हमने क्या प्रभाव छोड़ा भारतीय खिलाड़ियों ने, सिल्वर मेडल जीत के आई थी भारतीय जोड़ी, और उसमें से तो एक कंटेस्टेंट यहाँ पे हिस्सा भी ले रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और एशियन जो चैंपियनशिप होती है रोइंग की, कायाकिंग की, उसमें भी भारत ने अपना प्रभाव छोड़ा है हाल के वर्षों में, और यकीनन वो प्रभाव देखने को मिलेगा यहाँ पर भी जैसे जैसे ये आयोजन आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे ये शुरुआत हुई है, अभी पहल भर है। तो आप इस 3 दिन के एक्शन में आप कई सारे सितारों को देखेंगे उभर कर आते हुए, और संभवतः आने वाले दिनों में भारत का भी प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। लेकिन इस नज़ारे की क्या बात, चिनार के पेड़ आपका दीदार कर रहे हैं, आप लुत्फ उठा सकते हैं इस खूबसूरत वादियों की। और ये खूबसूरती है कश्मीर की हमारे, कि आप जब विंटर के टाइम में यहाँ पर आएँ तो बर्फ से लदी हुई पहाड़ मिलते हैं, और जब आप समर के टाइम में यहाँ पर आएँ तो आप
हरे भरे पेड़ों का लुत्फ, हरियाली, हर तरफ हरियाली आपको नजर आती है। Beautiful pictures, a beautiful, wonderful view. We've wrapped up 13 races thus far, so about 7 more to go. And as you watch these beautiful pictures, let's tell you that we have about 10 minutes before the next race starts. And that will be the men's 4 between Telangana, Haryana, Madhya Pradesh and Jharkhand. Hold your horses, don't go away anywhere. We'll be back soon as you enjoy these beautiful pictures.
Such beautiful and stunning pictures of the Dal Lake in all its splendor on your screens. And there you can see Dal settled right in the center of the city of Srinagar. You can see a lot of settlements all around it. It's breathtakingly beautiful and a destination that embodies the essence of nature's true splendor. And all these resorts and hotels around it are a testament to its popularity and the demographic, a true reflection of India's rich cultural heritage and natural beauty. Dal Lake has a storied past dating back to the 17th century when it was built by Sultan Hassan Shah, a man-made lake utilizing the waters of the river Jhelum. And over centuries, this lake has been a favorite haunt of many sultans and emperors in the initial years, and then, of course, by the British. Now, today, we have the Dal Lake as a home from a water sports perspective to thousands of tourists who visit the Dal to experience its true splendor. The lake, of course, has a green bottom, but the waters are quite clear when you are on them, creating a mesmerizing display of colors and light, especially when you have the reflections of the mountains. And visitors can take a leisurely boat ride on the shikaras, take a tour and explore the many inlets and outlets that you have. A lot of markets that are there right in the center of this beautiful and stunning lake, which has scores of these famous luxurious houseboats, which offer a unique and comfortable way to experience the lake's beauty in a calm and composed manner. A shikara ride is a must-have if you're visiting the Dal Lake. These houseboats that are all across the lake are adorned with intricate woodwork, beautiful woodwork, and colorful fabrics, especially even the roofs of these rooms, where you can see a lot of intricate handwork done, provide a glimpse into the rich cultural heritage of this part of India. Guests can relax on the boat's deck and enjoy the local cuisine as well. The Vazwan food and cuisine is such a treat. As you can see, the mountains all around the lake is situated in the heart of the Kashmir Valley, surrounded by these towering mountains, lush green forests. The valley offers such breathtaking scenery, combining it with the serenity of the atmosphere and creates a beautiful haven for nature lovers and photographers, especially in springtime when you have these beautiful flowers in different colors, enriching the joys of someone with the penchant to register that click sound when you pull the trigger. The Dal, of course, is connected to several rivers. Jhelum is the main contributor, which flows through the valley and much through the city of Srinagar. The lake's waters are also fed by several springs and streams, ensuring that its beauty is long-lasting and perennial. Some of the notable landmarks that you can see around these developments, you have the Hazrat Bal Shrine, a revered mosque that houses a heir of the great Prophet Muhammad. We have the Nagin Lake, a small lake connected to Dal Lake that gives stunning views and tranquility. We have the Mughal gardens as well, the beautiful gardens built by the Mughal emperors, showcasing intricate architecture and landscaping. And a lot of people who have come here for the Khelo India water games have been clicking pictures and trying to capture the best of Dal Lake's beauty.
and its multifaceted nature, the wildlife that's on display, and the lush greenery, the mountains all around, the beautiful landscape. The lake's rich history, the cultural significance, and the natural beauty make it a definite must visit destination for anyone traveling to India. I would definitely recommend it in the winter months when you have access to Gulmarg and the gondola rides, wherein you have some amazing ski slopes, especially at level 1 and level 2. Dal Lake historically has been a strategic location, has made it an important center for politics, art, and literature. But now, with the Khelo India Water Festival here, it has also become a destination that must be remembered for sporting excellence as well. As we reach for the men's coxless four, lane number 1 is Telangana, lane number 2 is Haryana, Madhya Pradesh in lane number 3, and Jharkhand bringing up lane number 4. The lineups and the names are in front of you as we await the go ahead from the officials. And we have the signal as the rowers get into action. It's been a good start from lane 2 and 3. Watch out for in lane 2, like I mentioned, we have Haryana, and in lane 3 we have Madhya Pradesh. Both these teams have started a little stronger than Telangana and Jharkhand, but it's not that we can see a clear differential as of yet. Definitely lane number 2's Haryana seem to be off to a much better start than those in lane number 1, Telangana. Slowly creating some gap between them and Telangana. Of course, keeping pace alongside them is Madhya Pradesh. There in lane number 1 is Telangana, not quite doing their best. We might have drones in the air, but the eagle soaring bright and strong, enjoying these beautiful pictures as Team Haryana row their way into that first position, closely tracked by Team Madhya Pradesh. Madhya Pradesh in that bright fluorescent kit, almost unmistakable. Good start, very good start by Team Haryana. They have on their left Team Madhya Pradesh. So this seems to be a fight between Team Haryana and Madhya Pradesh, but can't count them on the outside. In lane number 4, Team Jharkhand also rowing quite well. Jharkhand almost coming into that second position, taking that second position away from Team Madhya Pradesh, but Haryana still holding strong. We are reaching the midway point of this race. Can they finish strong? Who is going to finish strong? It's the 1 kilometer race, 1,000 meters as we cross the 500-meter midway mark. Team Madhya Pradesh there, neck-to-neck battle. The rows are close to each other. Contact between the two. How are the officials going to take that into consideration? Complete rhythm breakdown for Team Jharkhand. But Madhya Pradesh still going strong. Pulling ahead, pulling away. It's all about Team Madhya Pradesh right now. They've created that gap, moved away from Team Jharkhand. Team Haryana also lagging behind now. Looks like a Madhya Pradesh story. Team Jharkhand at one point of time were neck to neck, but they'd lost that battle because they had moved away from their lane towards the lane of Team Madhya Pradesh. And then realizing that this is going to be an uphill task, stepping away from that contest. Looks like the story belongs to Team Madhya Pradesh. Finishing second is going to be Haryana. We will, of course, wait for the official confirmation of the scoreline. Is it Team Haryana? Is it Team Madhya Pradesh? That's what we will be waiting for.
देखना दिलचस्प होगा लेन वायलेशन जो हुआ है उसकी वजह से किस तरीके की क्या कोई पेनल्टी इंपोज की जाती है या सीधा डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर। अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रेपेचेज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, और वहीं अगर आप पर पेनल्टी इंपोज की गई तो संभावना है कि आप रेपेचेज के जरिए फिर से वापस अपने फाइनल की जगह सुनिश्चित कर पाएं। इंतजार रहेगा हमें आधिकारिक पुष्टि का, लेकिन पहले स्थान पर रहते हुए मध्य प्रदेश की टीम ने जरूर बाजी मारी है इस मेन कॉक्सलेस 4 के इवेंट के अंदर। लेकिन अभी भी वो आधिकारिक पुष्टि और सारी निगाहें अब ऑफिशियल्स पे, और यकीनन वो ऑफिशियल्स की तरफ से बुलावा आ गया है, इशारे से बुलाया है और वही बातचीत की जा रही है वहां पर ऑफिशियल्स की तरफ से कि आपने लेन वायलेट जो किया है उसका हर्जाना संभवतः आपको भरना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश ने जरूर लीड किया है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, यकीनन देखना होगा कि किस तरीके का नतीजा अब सामने आता है। First controversy, because of this particular Khelo India edition of Water Sports Festival 2025. Men's coxless 4. And the heat number 1 delivering for us completely. We had a tussle between Madhya Pradesh and Jharkhand in lane 3 and lane 4. It's completely broke down the rhythm of Team Jharkhand, because after that clash they couldn't really keep pace. At one point of time it was a contest between Madhya Pradesh and Haryana. As we await the results, the next race already set up. We have the lightweight men's double scull heat number 2. Let's take a look. Lane 1 is going to be Assam. Lane 2 is going to be Madhya Pradesh. Lane T is Jammu and Kashmir. Lane 4 is Telangana. Jaspreet Singh there, who's going to be in key in lane number 1 for Assam. Jaspreet Singh and Sukhinder Singh in lane number 1 for Assam. The volunteer there holding the boat in place as we await the signal to start off proceedings. मेन लाइटवेट डबल स्कल, यानी एक बार फिर से दोनों हाथों का दमखम दिखाना होगा। कॉक्सलेस में आपको सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करना होता है, आपको एक पतवार पर ही सारा जोर आजमाइश करना पड़ता है, लेकिन कहीं से भी स्टेमिना के मामले में, आपके ताकत के मामले में, दोनों में से किसी भी इवेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे स्कल के इवेंट्स हो या कॉक्सलेस। चलिए फिलहाल ये मेन लाइटवेट डबल स्कल की स्पर्धा शुरू होते हुए हीट नंबर 2 ग्रुप बी से ये मुकाबला इस समय एक्सट्रीम वाइड आपको राइट हैंड साइड पे जो दिख रही है वो लेन नंबर 1, और आसाम ऐसा लग रहा है कि शुरुआती लम्हों में वो लीड बना के रखी है उन्होंने अपने पास। उनके समानांतर मध्य प्रदेश एक बार फिर से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए अब ये जो समय होता है यहाँ आपको अपनी गति पर के साथ साथ अपने मोमेंटम को बनाए रखने की होती है। जब आधा सफर तय हो गया तो फिर आप उस बढ़त को धीरे धीरे और पुख्ता करने पर आपका ध्यान होना चाहिए, आप उसको और बढ़ाते चले जाइए, मार्जिन को और मिटाते चले जाइए। लेकिन आप देखिए दूसरे स्थान पर जो टीम चल रही है वो यकीनन यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है। मध्य प्रदेश एक बार फिर से वहां लेन नंबर 2 से मध्य प्रदेश की तरफ से इस समय अरुण डांगी और तनिष्क इस समय वो प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असम जसप्रीत सिंह और सुखजिंदर सिंह
आमतौर पे ऐसे नाम असम में देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन आज ये भारत है जहां पर आप किसी भी कोने में जाके आप अपने खेल से, अपनी काबिलियत से किसी भी राज्य की टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। और वही कुछ इस समय देखने को मिल रहा है। इस फिलहाल असम की टीम लीड कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश जो आपकी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही है, अरुण और तनिष्क की जोड़ी, वो इस समय कड़ी टक्कर देती नजर आ रही। Of course, because Assam has also drawn a lot of workforce as part of the ONGC, of part of the Assam Rifles, and slowly you see the next generation of youth in that particular state having a nice mix of ethnicity. And I think Jaspreet and Sukhwinder, good testament to that mix. Assam in a very strong position at the midway point of this race. We seem to be approaching the 500-meter mark. Another 500 odd meters to go. Madhya Pradesh also well and truly in the mix, never to be let go. What a race this is. What a race this is turning out to be. 1 and 2 clearly up there between Assam and Madhya Pradesh. That's the competition that we are seeing. That's the battle. It is the battle that we need to look out for. What a close race this is going to be. What a close race this is going to be. Madhya Pradesh beginning to feel the pressure as they come from behind. Have they overtaken them in time? That's going to be the question. This is too close to call. Too close to call. Right at the last moment, that battle between Assam and Madhya Pradesh. We need to wait and watch who has taken the victory. Heat number 15. Lightweight men's double scull. Heat number 2 action. And what a close game it was. Assam and Manipur. Manipur having a good couple of races as well. But right now, Madhya Pradesh as well getting into the mix. We saw Orissa dominate a couple of races as well. But this duo from Assam finished so strong. Jaspreet Singh there along with Sukhwinder Singh. They finished that race so strong. And there's confirmation. Assam finish right on top. What a race from these boys. Madhya Pradesh held the fort for a considerable amount of time in that 1,000-meter race, for almost 400 odd meters. It was Arun Dangi and Tanishq of Madhya Pradesh who held the lead. But coming from behind, Jaspreet Singh and Sukhjinder Singh taking that top position, making it into the finals. Let's get a confirmation there. 3 minutes and 17 seconds. Assam rank 1. Madhya Pradesh coming second, so close, less than 1 complete second. 3 minutes 18 seconds 32.32, 3 minutes 17 seconds 0.76, half of a second separating these two teams. What a close race this was, the closest race that we have seen thus far. And with this, we move to race number 16. This is going to be the women's single scull. Heat number 2.
Nice to see that lineup in the water, getting ready for the next set of races. Right now, we are approaching the business end. We have 5 more to go. And Punjab, Maharashtra, Orissa, and West Bengal is going to be in contention. I'm just updated that Gursharanpreet Kaur of Orissa will not be taking part. So it's going to be Punjab, Maharashtra, and West Bengal who are going to be in the mix. आप दोनों काम लगाए जिसमें आवाज आएगी ना वही यूज करो 'Great look at the boat there, the double scull. Confirmation of that heat number 2 for the women's single scull or Punjab Amandeep Kaur. I think that's not quite the result. That was the lineup. That's what it was supposed to be when they fixed that up. Punjab Amandeep Kaur. Maharashtra will be represented by Sahara. Then Orissa isn't taking part in this race. So we'll have 3 rowers. Shweta Brahmachari from West Bengal will bring up the 3rd rower. 6 minutes to go till the next race. The women's
double scull, heat number 2. सुबह धूप भी पड़ती होगी इधर इस बार बंदोबस्त बहुत खराब है फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कार्ड दे रहे हैं और रस्सी नहीं दे रहे तुम्हें मिला सर एक फैन चाहिए मैं थोड़ा बहुत हवा भी आ रहा था तो सेफ होता वही जैकेट मेरा चार्ज हो रहा है उसे रख दे रहा हूँ एयर टाइट होना रख दो चार का 1.5 घंटा 1.5 घंटे में 2 बैटरी चार्ज हो जाएगी तुम्हारी दोनों बैटरी ले जाओ एक भी चार्ज होगी तो 3 बैटरी लेके जाओ beautiful there to see the fishermen community getting by their day-to-day activities as they operate alongside the sporting fraternity here on the beautiful Dal Lake in Srinagar, कितना टाइम लगेगा आधी बैटरी खत्म हो जाएगी casting their nets in unison. The Dal Lake, of course, source of livelihood for so many. And where there is water, there is fish. Then you will have the predators as well. The high-flying eagle soaring in the skies above the Dal Lake, getting probably the best view of this beautiful, beautiful lake. Best of the action here in this Khelo India Water Sports Festival 2025. And there are 5 disciplines. We have a shikara race that's going to happen. We have a dragon boat race that's happening as well. We have rowing, which is taking place right now, the qualifiers and the heats in progress. And at a different location, today itself, we have canoeing and kayaking action taking place as well. We are approaching 12:40, which is the scheduled start time for the women's single scull heat 2. So the rows that you see on your screens will be falling into place, getting into position.
looking to start in about 3 to 4 minutes as the action kicks off. We will be having only 3 starters, like we've been mentioning. Punjab, Maharashtra and West Bengal, and all 3 are available right now at the start point, waiting patiently for the clock to strike 12:40. Heat number 2, Dal Lake in Srinagar. Like, to us, it might be a source of beauty and recreation, but to him there on your screens, it's all about livelihood. It's all about putting food on the table. And the Dal Lake, of course, in all its avatars, providing to each his own. It's a true gem of Srinagar, showcasing the region's natural beauty, the rich history and the cultural heritage, which is why visitors from around the world flock to this majestic lake to experience its serene atmosphere, stunning scenery, and that getting a taste of that warm Kashmiri hospitality. Whether you're a nature lover, a history buff, or simply looking for a relaxing getaway, Dal Lake, no doubt, is a destination that you will be spellbound with. Over the next 2 days, of course, alongside the beauty, you can also experience the best of water sport talent in the country, all coming together here to be a part of this celebration of sport, the Khelo India Water Sports Festival 2025. The first edition here, and with this first edition, we will only get better with each coming year. That's a motorized shikara, not something quite that I enjoy or recommend. I do believe that whenever you come to the Dal Lake, try and take the shikaras, which have the human rowers, and it becomes a source of livelihood for them as well, and also reduces the pollution in the lake. Try your best to not encourage any mechanized boats on this pristine and beautiful lake. We should start any moment now. I think we are waiting for the technical officials to give the go-ahead. All the 3 participants are in the right place, in the right position, and they should be getting the nod to start this race soon. ग्रुप बी में इस समय हीट 2 का ये मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है विमेन सिंगल स्कल के अंदर, जहां पर थोड़ा सा विलंब हो रहा है और यकीनन इस समय का सही सदुपयोग खिलाड़ी तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ डल लेक में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो विभिन्न प्रकार की आजीविका पर निर्भर हैं, और यकीनन
लगातार हम बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये आयोजन आपकी तरफ लेके आया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खेलो इंडिया लेकर आया आपके लिए, और उसी के माध्यम से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। श्रीनगर से डल लेक में ये आयोजन हो रहा है। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम रेस को शुरू करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेन नंबर 3 जो है वो वेकेंट है, खाली है, यानी ओडिशा की गुरसमृत कौर इस रेस में हिस्सा नहीं ले रही हैं, और इस वजह से ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर ही 2 विमेन सिंगल स्कल, अमनदीप कौर पंजाब की, महाराष्ट्र की सहारा सहीर, और साथ ही साथ 2 एथलीट्स और भी उनके साथ जो नजर आएंगी, पंजाब की अमनदीप कौर और वेस्ट बंगाल की श्वेता। चलिए रेस का आगाज होता हुआ, रेस का आगाज होता हुआ, हीट नंबर 2 का आगाज होता हुआ विमेन सिंगल स्कल स्पर्धा के अंदर सबसे वाइड यानी पहली लेन में इस समय जो चल रही है टीम पंजाब, अमनदीप कौर लीड कर रही हैं फिलहाल, लेकिन उनको लेन नंबर 4 से कड़ी टक्कर मिल रही है। पश्चिम बंगाल की श्वेता ब्रह्मचारी, उन्होंने भी मजबूती के साथ उस दूसरे स्थान को होल्ड करके रखा है और बहुत ज्यादा फासला बढ़ने नहीं दिया है अब तक, और फिलहाल तीसरे स्थान पर लेन नंबर 2 से जो चल रही हैं वो हैं महाराष्ट्र की शाहिर शारदे, और यकीनन बहुत ज्यादा फासला नहीं है तो बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही हैं कि यहाँ दोनों एक्सट्रीम जो लेन्स हैं राइट और लेफ्ट की तरफ, उनके खिलाड़ियों के बीच में, उनके रोवर्स के बीच में एक कड़ी स्पर्धा देखने को मिल रही है। फिलहाल जो बढ़त है वो जरूर अमनदीप कौर जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो जरूर सबसे आगे निकलती नजर आ रही हैं, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है नहीं और किसी भी पल श्वेता उनको पछाड़ सकती हैं। बराबरी की अब परिस्थिति में इस समय अपने आप को ले आई हैं, लेकिन पंजाब की अमनदीप इस समय जरूर धीरे धीरे वो हाफ लाइन मार्क की तरफ बढ़ती हुई, और ऐसा लग रहा है कि अब वो बढ़त अपनी और पुख्ता करने की तरफ बढ़ेंगी। जो फासला उन्होंने बनाया है श्वेता के खिलाफ, उस फासले को और बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की श्वेता जो फिलहाल दूसरे स्थान पर चल रही हैं लेन नंबर 4 में, और वहीं लेन नंबर 1 में अमनदीप कौर वो लीड कर रही हैं। लेन नंबर 3 खाली है। लेन नंबर 2 में महाराष्ट्र की सहारा इस समय पिछड़ती नजर आ रही हैं, और उनके लिए अब समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ये पहले और दूसरे स्थान की जो जंग है वो और दिलचस्प होने की कगार पर पहुंच रही है। फासला और थोड़ा कम किया है। पंजाब की अमनदीप कौर पहले स्थान पर जरूर चल रही हैं, लेकिन देखिए अब श्वेता ने अपनी वो कमर कस ली है और रफ्तार अपनी बढ़ा दी है, अपनी बाजुओं को खोल सा दिया है, और अपने पतवार के जरिए, उस ब्लेड के जरिए पानी को काटते हुए तेजी से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते वो पीछे छोड़ पाएंगी अमनदीप कौर को, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक पिछड़ी नहीं है अमनदीप, लेकिन क्या जब ये आखिरी कुछ मीटर रह गई है इस रेस के अंदर, वहां से कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की श्वेता ऐसा लग रहा है अब आगे निकल चुकी हैं। जी हाँ, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर
इस बात की पुष्टि होती हुई कि पश्चिम बंगाल की श्वेता अब लीड करते हुए बहुत तेजी के साथ आगे निकल चुके हैं। लेन नंबर 4 से पश्चिम बंगाल की श्वेता ब्रह्मचारी टॉप कर रही हैं, ऐसा लग रहा है इस हीट को। हीट नंबर 2 वुमेन सिंगल स्कल स्पर्धा के अंदर ग्रुप बी में पहला स्थान हासिल किया है श्वेता ब्रह्मचारी ने। पश्चिम बंगाल की पहले स्थान पर रही पंजाब की अमनदीप कौर काफी समय तक लीड पर रही थी। 75% रेस का समय उन्होंने लीड करते हुए गुजारा था, लेकिन आखिरी के जो कुछ मीटर 100 मीटर के आसपास का जो फासला जब रह गया था फिनिशिंग लाइन की तरफ, तब पश्चिम बंगाल की श्वेता ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया और इस हीट को टॉप किया है, लीड किया है। विमेन सिंगल स्कल हीट नंबर 2 को पश्चिम बंगाल की श्वेता ब्रह्मचारी ने। एक अच्छी और दिलचस्प रेस जहां उलटफेर देखने को मिला, काफी कड़ी चुनौती पेश करती हुई श्वेता ब्रह्मचारी अमनदीप कौर के सामने, और अंततः वो हीट को लीड करती हुई टॉप करती हुई उसकी पुष्टि होती हुई श्वेता पश्चिम बंगाल की 4 मिनट 09.39 सेकेंड का समय लेकर शीर्ष पर रही, और उन्होंने पछाड़ा है करीब 3 सेकेंड के फासले से, 3 से 3.5 सेकेंड के फासले से उन्होंने अमनदीप कौर को पीछे छोड़ा और सहारा तीसरे स्थान पर रहे। तो इस तरीके से अमनदीप कौर जो कि काफी समय तक इस रेस में लीड करती नजर आई थी, लेकिन अंततः श्वेता ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया। एक बैटरी पूरे एक ही रेस पे चली गई इसमें, एक बैटरी में 3 रेस हो रही थी। चार 8 बैटरी ये तो बताना प्रोग्राम का बताना चाहिए ना। उन्होंने सुबह बोला कि 1 घंटा होगा, इतने टाइम में जाएगा, लगातार पूरे दिन होगा तो पावर से रिक्वायरमेंट तो आनी चाहिए ना, एक ही सेकंड में 16 बैटरी नहीं रुकती। एक कैमरे पे कोई भी कैमरे पे आपको पता होगा 3 बैटरी होती है, 16 का फिर बैटरी नहीं लगेगा। अब ग्रुप बी में हीट नंबर 1 मेंस डबल स्कल की स्पर्धा शुरू हो रही है, जहां पर ओडिशा लेन नंबर 4 में नजर आएंगे, लेन नंबर 3 में पश्चिम बंगाल, लेन नंबर 2 में हरियाणा और मध्य प्रदेश लेन नंबर 1 में। एक और बार नजर रहेगी इस डबल स्कल की स्पर्धा के अंदर, जहां पर जब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की श्वेता ने वो कमाल का प्रदर्शन किया और पहला स्थान हासिल किया पंजाब की अमनदीप कौर को पछाड़कर। एक और बार अब नजर इन खिलाड़ियों पर। अमन सिंह और अरविंद होंगे लेन नंबर 1 में, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के जेम्स और उनके साथ अनुज आर्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा को, और वहीं पश्चिम बंगाल के प्रतीक गुप्ता और देवांशीष चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं ओडिशा की तरफ से सौरभ और रोहित इस इवेंट में अपने आप छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेन डबल स्कल स्पर्धा के अंदर इस समय ग्रुप बी में हीट नंबर 1 का आगाज होने जा रहा है। The players seem to be in their positions, waiting for the go-ahead from the race official. All 4 teams are nestled in Madhya Pradesh in lane 1, Haryana in lane 2, West Bengal in lane 3, and in lane 4, it's Orissa. The far end, Madhya Pradesh in their bright fluorescent yellow, easy to spot. Orissa in their reds,
we have lane 2 and 3, which is going to be Haryana, who are in red, and West Bengal, who are in light blue. Men's double scull, heat number 1. Players waiting for the go-ahead from the race official to start. Confirmation at the end point. That's what the race official is checking. Things are in order. Are they ready? And then he will wave them off. And he waves them off from there. So it's Madhya Pradesh, Haryana, West Bengal, and Orissa in this particular race, in that particular order, right to left. Seems like a fair start by all of them. No false starts in the mix as the race boat comes into position, keeping a watchful eye on all of them. Good start in lane number 2, Haryana. Lane number 3 as well, West Bengal, trying to emulate what Shweta had done in the women's single scull. Can the men in the double scull also match that feat? Madhya Pradesh there on your screens, Aman Singh and Arvind Singh Gurjar. And the nice long shot there. You can see the other teams from Haryana, West Bengal and Orissa there. Orissa on your left and most side of the screen. West Bengal sandwiched between the two reds. And Haryana on the right hand side of your screen. Just outside your screen on the right is Team Madhya Pradesh. There you can see the full array, the full landscape available to you as the rowers ski past the 300-meter mark, approaching that 500-meter mark. And that's sometimes the reference point for the more elite teams to go. Support screaming from the lake side, and I genuinely wonder whether their voices actually carry across the race to the rowers. Neck to neck battle. Madhya Pradesh there on your screens, crossing that 500-meter mark. Orissa seem to be holding on to some kind of a lead. Can they hold on to that lead right till the finish line? That's Orissa. They seem to be in the lead right now. Orissa with Saurabh and Rohit Bedwal. Saurabh and Rohit in a commanding position now. Once they cross that 500-meter mark, putting in their all. Holding a strong lead, but trying to catch up with them is Team Madhya Pradesh. Can they do it? Can they do it? Neck to neck battle. It's getting too close to call. Has Madhya Pradesh taken the lead? Yes, perhaps they have. Last moment, the last few rows. And I think that was too close to call, but perhaps it was Team Orissa that pulled off that win. We will wait for the official confirmation. We should wait for the official confirmation.
the two extremes in competition. Orissa in lane number 4 and Madhya Pradesh in lane number 1. And it was such a close matter that it was too close for us to call from here. We will delve into this in depth as these sides look for that automatic qualification at the end of heat number 1, the men's double scull. It's the highlights of this particular fixture. Orissa, Team Orissa, especially once they crossed that 500-meter mark, were just absolutely brutal. Madhya Pradesh were holding a steady rhythm right throughout this race, but eventually Team Orissa stepping onto the gas, stepping onto that accelerator and pulling away, setting this serene Dal Lake on fire. What wonderful peaking here as we approach lunchtime around 1 p.m. here in India. If you're watching these Khelo India Water Sports Festival from anywhere across the globe, we are in the beautiful state of Jammu and Kashmir, in Srinagar to be more specific, and on the waters of the beautiful Dal Lake are we settled and nestled for the next event. और एक और रेस का आगाज होता हुआ ग्रुप बी में हीट नंबर 2 वुमेन कॉक्सलेस पेयर का आगाज होता हुआ, जहां पर लेन नंबर 1 में अंडमान निकोबार की टीम, तो वहीं लेन नंबर 2 में पंजाब, लेन नंबर 3 में केरला और मेघालय की टीम लेन नंबर 4 में। ये 4 टीमें एक बार फिर से जोर आजमा इस पे, और नजरें स्क्रीन पर किस तरीके से आगाज होता है और किस तरीके से ये अंजाम तक पहुंचती है ये हीट, जिससे पहले हमने देखा कितना करीबी मुकाबला देखने को मिला हीट नंबर 2 विमेन कॉस्टलेस पेयर के अंदर। और आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल वाइड आपको नजर आएगी टीम अंडमान निकोबार, और इस समय वो शुरुआती लम्हा जरूर है, लेकिन अब धीरे धीरे वो एक्सेलरेशन पर पांव नहीं बल्कि हाथ जरूर जाएगा, क्योंकि रोइंग में आपको हाथों का सही इस्तेमाल, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और चूंकि कॉक्सलेस पेयर इवेंट है तो यकीनन यहाँ पर सिर्फ एक चप्पू आपको यानी पतवार का इस्तेमाल करना है, और विपरीत दिशा में दोनों जो रोवर्स हैं उनके आप देख सकते हैं पतवार आपको नजर आ रही होंगी। यही खूबसूरती है इस खेल की, एक अच्छे तालमेल की, एक अच्छे समन्वय के साथ अंजाम तक ले जाने की। और वही कुछ इस समय देखने को मिल रहा है इन 4 प्रतियोगियों के बीच में। ये 4 टीमें जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, इसमें अंडमान निकोबार की स्नेहा टोपो और अलग, साथ ही पंजाब की जसमीत कौर और जशमनप्रीत कौर, वहीं केरला कर्नाटका की कोमला और मानसा, जबकि मेघालय की देविका और गंगा ये हिस्सा ले रही हैं। हीट आज दिन की शुरुआत के साथ ही ये पहला दिन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के अंदर, और पहले दिन हीट्स का आगाज हुआ है। और रोइंग के अंदर इस समय ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स के जरिए, साथ ही साथ आप प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसका लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। डल लेक श्रीनगर का इस पहले संस्करण की मेजबानी करता हुआ, और अब धीरे धीरे वो हाफ लाइन मार्क क्रॉस करने के बाद देखिए टीम पंजाब इस समय आगे निकलने की फिराक में, और उस बढ़त को और आगे ले जाने की फिराक में टीम पंजाब
आपको नजर आ रही है। लेन नंबर 2 में जैस्मीन कौर और जशमनप्रीत कौर की ये जोड़ी कोशिश कर रही है और फासला देखिए बढ़ाती चली जा रही है और अच्छा खासा फासला तय कर लिया है। दूसरे और तीसरे स्थान के लिए जरूर वहां पर दूसरे स्थान के लिए टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय पंजाब ऐसा लग रहा है एक तरफा अंदाज में इस हीट को अपने नाम करने में कामयाब रहेगा और यकीनन पहले स्थान पर रहते हुए पंजाब ने इस हीट को अपने नाम किया है। जैस्मीन कौर और जशनप्रीत कौर की इस जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। ग्रुप बी में ये दूसरे हीट की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके अपनी वो फासले को बढ़ाती चली गई पंजाब की टीम और अंततः वो अंक जो पूरे क्वालिफिकेशंस में चाहिए जिस तरीके के प्रदर्शन की जरूरत थी वो हासिल करती हुई पंजाब की टीम और पहला स्थान हासिल करती हुई। थकावट साफ नजर आ रही है, कितनी मेहनत और कितनी बाजुओं की ताकत लगानी पड़ती है रोइंग के इस खेल में और बहुत अहम हो जाता है कि आप किस तालमेल के साथ उस ताकत को लगाते हैं, क्योंकि आप तालमेल बैठाएंगे तभी उस ताकत को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे और वही कुछ देखने को मिला। ठीक है सर 19 रहने दो 520 में ये स्टार्ट होगा। ठीक है तब आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। पंजाब की टीम ने जिस तरीके से वो प्रदर्शन किया यकीनन काबिल तारीफ और पहले स्थान पर रहते हुए उस हीट को अपने पक्ष में मोड़ा और वो हासिल किया। चलिए अब मेंस 4 की तरफ चलते हैं और इस समय तैयार हैं इस हीट के आगाज के लिए ये चारों टीमें और इस समय लेन 1 में केरल, लेन 2 में उड़ीसा, लेन 3 में पंजाब, लेन 4 में दिल्ली और इन खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी इस हीट को अपने पक्ष में मोड़े और उस प्रदर्शन से प्रभावित करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। इंतजार और फ्लैग ऑफ। जी हाँ, इशारा मिलता हुआ निकल जाइए, रेस लगाइए और पहले स्थान के लिए जो वो टक्कर है उसको अपने पक्ष में मोड़िए। मेन कॉक्सलेस 4 का ये इवेंट जिसमें हीट नंबर 2 का आगाज हो चुका है। डल लेक इस समय अब धीरे धीरे हम दिन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं आज रोइंग के इवेंट के अंदर और इस समय जो सबसे एक्सट्रीम नजर आ रही है टीम केरला लेन नंबर 1 में आदिनाथ, साचू, नवनीत और नामबियर। ये चौकड़ी इस समय केरल का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो लेन नंबर 2 में उड़ीसा की तरफ से प्रियांशु, जगदीप, हंसराज, सुमित इस समय लेन 2 में और लेन नंबर 3 में पंजाब के गुरप्रीत, प्रियांशप्रीत, शुभदीप और आदेश प्रताप सिंह। वहीं दिल्ली की तरफ से भोपाल सिंह, भूपेंद्र, कपिल और नितिन। ये चौकड़ी इस समय इस रेस के अंदर मेन कॉक्सलेस 4 इवेंट के अंदर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश में आपकी स्क्रीन पर एक्सट्रीम राइट जो नजर आ रही है बिल्कुल दाहिने तरफ वो लेन नंबर 1 है और लेन नंबर 1 में है केरल की टीम। केरल की टीम इस समय आपको बिल्कुल नजर आ रही है। जिस तरीके का प्रदर्शन आज पूरे दिन हमने देखा है, पहले दिन जब ये खेलो इंडिया बी
जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहे हैं उसके अंदर यकीनन केरल ने अपना दबदबा दिखाया है रोइंग के इवेंट के अंदर, लेकिन ओडिशा ने भी आज कई बार प्रभावित किया है और वही कोशिश एक और बार देखने को मिल सकती है। पंजाब लेन नंबर 3 में इस समय मिडवे रेस की तरफ ये मुकाबला पहुंचता हुआ। ओडिशा फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है यहाँ से, ये एक ऐसा एंगल होता है जहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम लीड कर रही है, लेकिन एक फासला अच्छा खासा है दिख रहा है, तो हम जरूर कह सकते हैं कि टीम ओडिशा इस समय लीड बना के रखने में कामयाब रही है। मैन कॉक्सलेस 4 के इवेंट के अंदर टीम ओडिशा लेकिन सबसे वाइड नजर रखी है लेन नंबर 4 में। वो टीम लेन नंबर 4 से दिल्ली की टीम इस समय ऐसा लग रहा है कि कड़ी चुनौती पेश कर रही है, लेकिन वो अंदाजा तब लगेगा जब एक हमें क्लियर कट एंगल मिलेगा। और ऐसा लग रहा है दिल्ली ने उस हीट को लीड किया अंतिम क्षणों में और बाजी मारी है, इस हीट को अपने नाम करने में कामयाब रही है दिल्ली की ये चौकड़ी। दिल्ली के भोपाल सिंह, भूपेंद्र, कपिल और नितिन की इस चौकड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। आधिकारिक पुष्टि का हमें इंतजार रहेगा। Beautiful race done by Team Delhi as the safety boat gives us that signal. All is good, all is clear. Let's take a quick look at that replay. All of these teams started off quite well. The start was good, but then it's when we began to see the team in green beginning to make fast work of the challenge in front of them. Bhopal Singh, he was at the bow. There was Bhupinder and Kapil. And then at the stern position was Nitin. Odisha did try to give them some competition with Priyanshu, Jagdeep Singh, Hansraj and Sumit Chaudhary. But eventually, Team Delhi were too hot for this Orissa team to handle. Team Orissa's Priyanshu and Sumit Chaudhary at the bow and the stern ends. And in between were Jagdeep Singh and Hansraj. At the other end, West Bengal well and truly out of this race as the safety boat is getting back into position, getting all set for the last and final race for today. And that's going to be the men's double scull heat number 2. And that's going to be between Punjab, Delhi, Uttarakhand and Assam. Confirmation of that scoreline in the men's coxless 4. First position goes to team. And there seems to be some up and down there. Let's try and figure that out. इनसे बात कर लेनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए, अगर गलत है तो हमें गलत पढ़ देना चाहिए क्या ग्राफिक गलत स्कोर नहीं आपका ऑलरेडी गलत था दिल्ली टॉप किया है ना दिल्ली। अच्छा मतलब स्कोर का भी गलत है ऐसा, स्कोर पोजीशन के हिसाब से वो आपका टाइमिंग का चक्कर नहीं पता। रैंक दिखा रैंक मतलब जो जितना ऊपर सबसे ऊपर ऊपर आना हाँ हाँ चाहिए, बराबर तो आप दिल्ली को फोर्थ रैंक दिखा रहे हो, मतलब फोर्थ रैंक है नहीं फर्स्ट रैंक आता आप वो तो आप कंफर्म उधर से कर पूछ लीजिए। सकते हो ना, उधर से पूछना चाहिए। जो हमें लगा वो तो भैया वो सेलिब्रिटीज इस तरीके से कर रहे थे, लगा वही
The beautiful and picturesque Dal Lake now, where we've been here for about 3 hours for rowing action as part of this wonderful water sports festival, the Khelo India edition 2025. It's a great start, a great initiative by the center to bring together top talent in water sports from across the country to one location to experience the splendor of the Dal Lake, and alongside that to experience the thrill of competition as we approach race number 20, men's double scull heat number 2. There you can see the contestants getting into position. We will favorably look forward to a beginning any moment now. The event's running on schedule as well. The sun is up in the sky. Like we keep saying, this is a very taxing time to be rowing. Temperatures now hovering close to about 29 to 30 degrees, and the sun is up right in the sky. There we have lane number 4 is Assam, lane number 3 Uttarakhand, Delhi in lane number 2, and lane number 1 is going to be Punjab. Let me walk you through these particular teams. Punjab will be represented by Bhupinder Singh and Prithvi Singh Chima. Delhi to be represented by Arpit Singh and Pankaj Kulhari. Uttarakhand represented by Surat Singh, Rahul Chaudhary, and Mijanar Haq and Hiranya Rabha are going to be those representing Assam. We are off to the races. A good start from lane 1 and lane 2. I can quite confidently say in lane 4, Assam are quite out of contention. Lane 1 and lane 2, what a blistering start by Punjab and Delhi. Early moments here as they approach that 150-meter mark. The Team Delhi on your screens keeping that rhythm. Beautiful, the oars just gliding over the water as they pull through. Tough battle now in that second position on either side of Team Delhi between Uttarakhand and Punjab. Team Delhi still holding on to that lead. Rowing really well, approaching the 400-meter mark. As you can see the markers there, beautiful view of the shoreline that they are trying to reach. If you're wondering where we are seated very close to the end point. And where most of the cameras are placed as well, as these boats make their way towards the finish line. Team Delhi on your screens in the lead. Let me remind you, we have Punjab, Bhupinder Singh and Prithvi Singh Chima. We also have Team Delhi, Arpit Singh, Pankaj Kulhari. They are in battle. Alongside them in battle is Surat Singh and Rahul Chaudhary. Those are the two teams who are in solid contention. Punjab there bringing up the rear. So competition between Delhi, Uttarakhand and Assam heating up. Delhi and Uttarakhand probably in a much stronger position. Uttarakhand there trying to keep pace, but as we say that, Delhi begins to inch away to both lengths now. Up ahead as they approach the finish line. Confident beyond that 600-meter mark. Team Punjab.
trying their best to keep pace. Now accelerating through in lane 1, overtaking Delhi. Punjab in a very good position now in lane 1, finishing really strong, moving ahead, keeping their energy reserves for the latter part of the race as they approach the final mark. And they've done it. They have upset Delhi. Brilliant finish by Team Punjab. Delhi dominated that race for large portions of time, but eventually it was the team in blue. Team Punjab surprising everyone, and you can see that expression on their faces. Absolutely exhausted there. Bhupinder Singh and Prithvi Singh Chima. What a row. What a row from these two boys. Pulling off an upset. Many felt that this will be a competition between Delhi and Uttarakhand in lane 2 and lane 3, but giving it their 100%, giving it their all, the boys from Punjab surprise everyone and take the pole position. Heat number 2 in the men's 2 double scull goes to Punjab. And the safety boat gives us the light, confirming that the race is wrapped up. Team Punjab will be looking forward to translate this victory into the next final as well. A beautiful view of the the business end of the lake where we are seated, as Team Delhi was put to the rafters. Punjab giving them a tough time, snatching the victory away from Team Delhi. Well, Team Delhi will, of course, have an opportunity to run for this again. We have a repechage system. So in the repechage, Team Delhi with the opportunity to get back into the finals. What a good half day we've had of action here in rowing. Khelo India Water Sports Festival, the inaugural edition 2025. The best of rowing talent on display here in Srinagar. Well, we started off some time back, and when we started off, it looked like a battle between those two teams in green. Punjab were coasting in the initial moments. They weren't too aggressive, and these two teams in green, Delhi and Uttarakhand, seem to be holding the mix. The team Punjab were keeping a close eye against the competition on their left, as they kept a close eye on Uttarakhand and Delhi, and then somewhere around that 500 meter mark, between the two of them, a fuse seemed to go, Bhupinder Singh and Prithvi Singh Chima, and they decided enough is enough. They can catch up with these two green teams, and that's what they did. The last 400 meters was an absolute blitz by Team Punjab, and they crossed the finish line and were completely exhausted, making it into the finals of the men's double scull. Fantastic views of the Dal Lake, where we've been witnessing the best of action in the rowing considerations. And alongside me, Vikas and me have had a fantastic day looking at this beautiful scenery. We will be back with the action of day 2 from the rowing considerations very soon.
Until then, stay tuned for the best of action on the Doordarshan Sports Network.